Hello, good evening. Boys and girls, good evening. Am I audible and visible? Go on, give me the clearance, please. Mohit Arora is saying no. Rahul Kumar is saying yes. Compliment of no. Okay, very good. Just give me the clearance. Is everything okay, बच्चों बताइए? If everything is okay, we'll start. Okay. So, very good evening to all of you. I hope you're all doing well. Welcome to Maha revision, rank through GATE in the subject of operating systems. ठीक है, तो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम प्लान डिस्कस करेंगे. व्हाट विल बी द टेक अवेज फ्रॉम टुडेज सेशन एंड हु कैन वॉच दिस सेशन एंड व्हाट दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस, ये हम डिस्कस करेंगे पहले. तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूं, ये रिवीजन सीरीज है, महा रिवीजन है. ठीक है, सो इट बेसिकली मीन्स के आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं एटलीस्ट पढ़ा होगा. ठीक है, फ्रॉम गेट परस्पेक्टिव या एटलीस्ट कॉलेज में. देन ओनली दिस सेशन विल बी मीनिंगफुल, क्योंकि ये रिविजन कोर्स है. इट इज़ जस्ट लाइक फास्ट ट्रैक कोर्स. ठीक है, सो बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन है कि यू हैव ऑलरेडी मेड ए स्टडी ऑफ दिस, और चूंकि अब गेट एग्जाम काफ़ी नियर है, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप ये मान के चल सकते हैं कि ये आपका फाइनल रिवीजन होगा. हाँ, वी हैड ए रिवीजन कोर्स लास्ट ईयर ऑल्सो, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इन दिस रिवीजन सेशन, ये जो सेशन है हमारा, इसमें हम थोड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. PYQs है, सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉम्बो, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिक्स वेयर वी आर गोइंग टू लुक इनटू सम कॉन्सेप्ट्स along with PYQs. तो जब PYQs डिस्कस किया जाएगा, when we discuss the PYQs, so necessary concept जो है वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे. You can ask the questions based on the topics that we are going to make a discussion of, or based on the questions. Like somebody has just started, why threads are used, CSBYAJ. भैया वेट, जस्ट वेट, जब हम थ्रेड्स कवर करेंगे टॉपिक, जब आप पूछिएगा, थ्रेड्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं मैं. ठीक है, यही नहीं, एट द एंड ऑफ द सेशन, जब सेशन एंड होगा, वहां पर मैं आपको कुछ होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा. होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए. दिस विल बी अदर दैन PYQs. तो वो होमवर्क क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, एंड देन in case of any doubts you can interact me by telegram, my telegram ID. ठीक है, Shreshth is saying used English. I will be very happy to talk in English or deliver the lecture in English, but ये हिंदी प्लेटफॉर्म है, so therefore I have to use both. ठीक है Shreshth, I will have to use both English, हिंदी प्लस इंग्लिश. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. देखिए, सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड. एक बार देख लीजिएगा. इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, जहां पर हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कौन से पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज के बारे में डिस्कस किया जाएगा. इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. जनरली जब मैं फुल पेड कोर्स लेता हूं, फुल कोर्स जब कवर करता हूं, दिस इज द सीक्वेंस इन विच आई बेसिकली कवर. Very good evening to all of you again. Welcome to the platform. Okay. Then we are going to take up one of the important topic, process concepts and CPU scheduling. So काफी important topic है. ठीक है, जहां पर हम process concepts के बारे में बात करेंगे. Then basically we talk about CPU scheduling technique. आप ये मान के चल सकते हो 99% of the time you may be put questions from CPU scheduling. एक क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो CPU शेड्यूलिंग से. हर गेट पेपर में, इफ यू लुक एट द प्रीवियस 10 years पेपर्स, जनरली यू फाइंड one question from CPU scheduling. So that's why I mark that as an important topic.
फिर उसके बाद बात होगी सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक, यहां पर थ्रेड्स की भी बात होगी. सो समबडी वाज आस्किंग, लेट मी राइट. So here we will also have a discussion on threads and multi-threading. I don't have to make a mention. That is assumed. And then we will have synchronization and deadlock together, because deadlock is a part of synchronization. So synchronization mechanism, super duper important topic of operating system. Generally one or more questions you can expect from synchronization, or synchronization may the particular topic of importance, you can say semaphores. All synchronization mechanisms, in particular semaphore is important. तो उसके ऊपर भी हम ज्यादा emphasize करेंगे. ठीक है, हाँ बिल्कुल. आप you can take this as a litmus test के whether you remember everything or not, whether your preparation level is up to the mark or not, by means of this session. ये session से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि कितना आप रिमेंबर करे हो, right? How far you are able to retain the concepts. Yes. So that is about synchronization. फिर deadlocks. Deadlock is also an equally important topic. जहाँ पर हम देखेंगे like deadlock, what is the concept of deadlock, deadlock handling strategies, and implications of deadlock and problem solving. तो ये deadlocks का होगा. फिर उसके बाद next important topic is memory management and virtual memory. दोनों को combine किया जाएगा. So generally in the GATE exam you can definitely expect question from memory management. तो बच्चों जो स्टार मार्क कर रहा हूं मैं टॉपिक्स कि जो टॉपिक्स मैंने स्टार मार्क कर रहा हूं यहां पर, वो आपको ज्यादा एम्फसाइज करना है, ज्यादा उस पर फोकस करना है. These are the topics where you can expect questions in the exam. लेकिन ये मान के मत चलिए कि दूसरे टॉपिक से नहीं आएंगे, जरूर आ सकते हैं. लेकिन इन जनरल बाय एंड लार्ज अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखो तो these are the topics, these are the areas from where lot of questions have been asked on earlier occasions. So memory management and virtual memory काफी important topic है. और अगर आप बात करो प्लेसमेंट्स की तो जनरली जब पूछा जाता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर्स अपार्ट फ्रॉम DSA, अपार्ट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सब्जेक्ट है. अपार्ट फ्रॉम DSA यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम से आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर प्लेसमेंट पर्पस, देन कंपल्सरी यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी. मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी आपको प्रिडोमिनेंटली ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन द इंटरव्यूज फ्रॉम दिस एरिया. तो जहां पर फोकस होगा पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी इंप्लीकेशंस, ये सब इसमें डिस्कस होगा. फिर लास्ट में है फाइल सिस्टम. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम में जनरली देयर आर टू थिंग्स which are of importance: implementation, and secondly disk scheduling. These दो chapters, these दो topics are primarily important from GATE perspective. ठीक है, implementation aspect of file system and disk scheduling, ये दो important topics है from examination perspective. तो बच्चों ये रहा आपका सिलेबस. ठीक है, ये है आपका सिलेबस और इम्प्लीकेशंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो ये बेसिस पर लेट अस ट्राई टू स्टार्ट क्विकली विद द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. जैसे मैंने कहा, बिल्कुल ऑल द टॉपिक्स आई विल ट्राई टू टच अपॉन, फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट वंस एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये हमारा प्रिपरेशन लेवल रहेगा, ये हमारा डिस्कशन रहेगा. चलिए, सो बच्चों स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी क्विकली आगे बढ़ेंगे, फिर डायरेक्टली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर आएंगे और उसका जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं. So invariably I don't have to exactly define what operating system is. Operating system is an interface between user and hardware or user and computer. It is a resource manager, right? So I don't have to talk much about operating system. सभी को पता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. चलिए डायरेक्टली गोल्स पे आएंगे. गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, राइट? प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कन्वीनियंट एंड एफिशिएंसी. ये दो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं. तो ये दो इंपॉर्टेंट गोल्स में जनरली हमने कहा द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रखिए. इस पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं
because I remember in one of the earlier paper of GATE there was a question on goals of operating system, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे emphasize करता हूँ, ठीक है। So primary goal, main goal जो होना चाहिए वो है convenience, because we want easy to use environment. हर user ये चाहेगा कि मैं operating system को आसानी से use कर सकूँ, right, बआसानी use कर सकूँ. So convenience is the primary goal. Then secondary goal becomes efficiency. Secondary goal becomes efficiency. Efficiency becomes the secondary goal. लेकिन ये जो primary goal है convenience and secondary goal is efficiency, that is basically for a system, operating system which can work on a Von Neumann architecture or personal computer system. तो पर्सनल कंप्यूटिंग की जब बात करोगे आप तो कन्वीनियंस प्राइमरी गोल बनेगा और एफिशिएंसी सेकेंडरी गोल बनेगा. उसी तरह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेन यू टेक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसा अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, या फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट्स और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट चेंजेस, गोल्स चेंजेस. सो डोंट थिंक दैट कन्वीनियंस इज द प्राइमरी गोल ऑफ एवरी सिस्टम. हर एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का प्राइमरी गोल कन्वीनियंस नहीं होगा. गोल्स विल चेंज, प्राइमरी सेकेंडरी गोल्स विल चेंज एज द आर्किटेक्चर, एज द एनवायरनमेंट चेंजेस, एज द एनवायरनमेंट चेंजेस. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जब आप बात करोगे तो वहां पर प्राइमरी गोल रहेगा एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करोगे, नेटवर्क सिस्टम्स की बात करोगे, पैरेलल सिस्टम्स की अगर आप बात करोगे तो इंपॉर्टेंट गोल रहेगा स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी. मोबाइल एनवायरनमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी पर्टिकुलरली विथ रेस्पेक्ट टू एफिशिएंसी होगी विथ रेस्पेक्ट टू पावर, एनर्जी कंजम्पशन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एज द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट चेंजेस द गोल्स चेंजेस. तो चूंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हम जो कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फॉर ए पर्सनल कंप्यूटिंग डोमेन. So therefore, for personal computing domain, which is going to work or operate on a Von Neumann architecture, the primary goal is convenience, secondary goal is efficiency. बस इतना आप हमेशा याद रखिएगा. दूसरे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं. ये सारी पीपीटी आपको दी जाएगी एज सॉर्ट ऑफ नोट्स. आप उसे रिटेन कर सकते हो, आप उसे एक्सेस कर सकते हो. तो वही है लिखा गया. जो अदर गोल्स आर लाइक मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, ईज ऑफ डिबगिंग एंड सो ऑन. Then in general, what are the functions of operating system? Because this topic is linked, functions and goals. Functions वो है जो operating system से आप expect कर रहे हो to achieve something, to do something. What are the functions? Goals are something which you want to finally satisfy, right? So you carry out the functions to achieve the goals. Like important functions of a general operating system for personal computing domain would have process management, memory management, resource management, and then resource allocation, file system management, protection and security. ये important functions, right? These are the important functions. And then you have to basically talk about the types of operating system, right? Types of operating system. उसके लिए generally मैं ये कहता हूँ कि if you really want to see the chronology, जो operating system की development chronology है, it basically depends on the evolution of the computer. जैसे computers generation में develop है, उसी तरह correspondingly operating systems also got evolved. So first generation of computers, there was no operating system, everything was done manually. Second generation, no operating system. So boys and girls, the real operating system came into effect, came into being in the third generation of computers, particularly with the coming up of disk technology. ये generally हमेशा मैं कहता हूँ, with the disk technology, with the evolution of disk technology, two major types of operating system evolved for personal computers. क्या लिख के आप बताओगे, what are the two types of operating system? Can you tell me please, what are the two types of operating system? Not MS-DOS. Types I am saying, types, हाँ बिल्कुल. One is called uniprogramming. And the other is called multiprogramming. Generally, we write multiprogramming in short. I mean, it is my convention. I write in short as MPR. And you can write uniprogramming UPR, nothing wrong, as a convention. ये काफी important topic है बच्चों. Generally, students have a misconception here.
So I would like everybody to have a focused understanding with regard to this. Ability of the operating system to hold a single program in memory is called uniprogramming. तो uniprogramming का अगर आर्किटेक्चर आप समझो, this is the memory layout, right? This area is meant for storing your uniprogrammed operating system, and the other area is called user area, U area. So in this user area, if you can manage, U means the operating system can manage a single program. If the user area has a single program, right, single program P available in the user area, then that approach is called uniprogrammed operating system. So formal definition क्या होगा? The ability of the operating system to hold a single program in memory, right? Single program in memory is called uniprogramming. Can you please write down in the chat box and tell me what is the drawback of uniprogrammed OS? Come on, boys and girls, please write down in the chat box and tell me what is the drawback, main drawback of uniprogrammed OS for which we have to go for multiprogramming. Yes, we say that one single program is not sufficient enough. Yes, very correct. Many people are telling correctly. Starvation नहीं है बच्चों, idleness of CPU. देखिएगा, CPU will have the capability that we can run a single program at a time. So if I have a single program in memory and when I schedule this program in memory on CPU, right? CPU is busy. लेकिन जैसे ही ये program needs to go for IO operation, imagine this is the IO device. So when this program relinquish the CPU and go for IO operation, then CPU become idle. And when CPU become idle, you would like to schedule another program on CPU, लेकिन आप नहीं कर सकते हो another program. Why? Because the program should be in memory. लेकिन operating system बोलेगा, sir, I can manage only one program. Other programs are there, but where? They are there on disk. Disk technology. They are there on disk. यहाँ पर है आपके other program, P1, P2, P3, so on. So I have other programs, but unfortunately I cannot bring them into main memory because of operating system limitation. ये है drawback of uniprogramming. So therefore we say uniprogrammed drawback is it will lead to idleness of CPU. CPU utilization will be below average level, right? So it is not a desirable level. So that is the drawback. तो ये ड्रॉबैक अगर आप ओवरकम करना चाहो, इफ यू ट्राई टू ओवरकम, इफ यू वांट टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ दिस यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन है, यू नीड टू हैव ए सेटअप, यू नीड टू हैव एन अरेंजमेंट वेयर यू कैन हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी. दिस इज अ मेमोरी लेआउट अगेन ऑफ ए मल्टीप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. मेमोरी लेआउट. This area of memory where you can store programs is called user area. So ability of the operating system, like for example, this is the disk system. ये disk है आपकी. यहाँ पर आपके multiple programs है P1, P2, P3, so on, Pn. So if this operating system could hold multiple programs in memory, multiple ready to run programs in memory, is multiprogramming. Simple definition of multiprogramming. The ability of the operating system to hold, manage multiple ready to run programs in memory or processes in memory, that is multiprogramming. आप पूछोगे सर क्यों रहना चाहिए मल्टीप्रोग्राम? इसीलिए कि like earlier occasion, if this program which is running on CPU got the control of CPU, and like earlier occasion, if this program leaves the CPU for performing IO operation or maybe leave the CPU for any other purpose, I can have another ready program to get scheduled onto CPU so that the processor can be kept busy. Objective of multiprogramming is to maximize CPU utilization. Basic objective of multiprogramming is to maximize CPU utilization. ये important point. क्या होगा मैक्सिमाइज करोगे आप CPU यूटिलाइजेशन को? नो आइडलनेस ऑफ CPU. CPU आइडलनेस को अगर आप रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? यूटिलाइजेशन हाई करने से क्या होगा? थ्रूपुट विल इंक्रीज. थ्रूपुट इंक्रीजेस. It increases the throughput. What is throughput? Throughput is number of programs completed per unit of time. Number of tasks completed per unit of time. Not responsiveness, Tilak Sharma, I will come to it. Responsiveness अलग फैक्टर है. यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है idleness of CPU और CPU utilization की. Responsiveness is a different thing. चलिए, ये है बच्चों fundamental difference between uniprogramming and multiprogramming. तो क्यों multiprogramming में हमें जाना चाहिए वो भी बात मैंने आपसे कही है. तो नेक्स्ट बात होगी टाइप्स ऑफ मल्टीप्रोग्राम्ड OS. नेक्स्ट बात होगी टाइप्स ऑफ मल्टीप्रोग्राम.
बोलिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और यू से मल्टी प्रोग्राम ओएस? लिख के चैट बॉक्स में बताइए. यस, वेरी करेक्ट संदीप कुमारी. देयर आर टू टाइप्स, वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव एंड द अदर इज प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव का सिंपल डेफिनेशन है फोर्सफुल डीएलोकेशन. फोर्सफुल डीएलोकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैं ये कहूंगा, फोर्सफुल डीएलोकेशन फ्रॉम सीपीयू इज प्रीएम्प्टिव. नो फोर्सफुल डीएलोकेशन, इसे आप कह सकते हो वॉलंटरी रिलीज ऑफ सीपीयू. वॉलंटरी रिलीज of CPU is non-preemptive. Matlab, when you schedule a process onto CPU, when you schedule a program onto CPU, if the program is leaving the CPU voluntarily on its own, बिल्कुल, अगर प्रोग्राम खुद ही से अपने आप से अगर CPU को छोड़ रहा है voluntarily, तो हम उसे बोलेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव. कोई भी प्रोसेस को या प्रोग्राम को फोर्स नहीं करेगा CPU छोड़ने के लिए, वो है नॉन प्रीएम्प्टिव. So initially multi-programming was non-preemptive in nature. Non-preemptive in nature. ठीक है? Like Microsoft Windows, the first version of Windows 3.0 or 3.x was basically developed as multi-program non-preemptive operating system. तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा? जैसे somebody has written, इसका ड्रॉबैक क्या होगा of non-preemptive execution? का ड्रॉबैक ये होगा कि देखिएगा डायग्राम में, when you schedule one process, say P1, at what time P1 will relinquish the control of CPU, we don't know. We don't know what time the process will leave the CPU, right? So therefore the other processes are waiting. Exactly correct. So that may lead to starvation, that will lead to lack of responsiveness or lack of interactiveness. देखिएगा, जो दूसरे processes यहाँ पर wait कर रहे हैं, they are waiting for the CPU, they are waiting themselves to run on CPU. They are waiting for their chance to run on CPU. How long should they wait? Unpredictable, non-deterministic, indeterminate, infinite. I mean indeterminate. Infinite तो नहीं कहेंगे हम, indefinite waiting. ठीक है? So lack of interactiveness. So here we will write, the main drawback of non-preemptive execution is lack of responsiveness or lack of interactiveness. The system become poor interactive or the system become poor responsive. So if you want to make your system responsive, if you want to make your system interactive, अगर आप सभी processes को जल्द से जल्द CPU पे लाना चाह रहे हो, जल्द से जल्द CPU देना चाह रहे हो, because जब process memory में आता है, तो it is expecting to run on CPU at the earliest. That is called interactiveness, right? जब आप क्लास ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो आप चाहोगे कि टीचर जल्द से जल्द स्टार्ट करे क्लास. अगर जल्द से जल्द स्टार्ट नहीं हो रही, तो you keep on starving. You keep on flashing the messages. Sir, when will class start? When will class start? You want interactiveness. उसी तरह process का भी है, same concept. So that is forceful deallocation. You don't want the process to hog the CPU, HOG, hog. मतलब keep on controlling the CPU on its own. No. Every process should be given at least a good chance to run on CPU. That is interactiveness. So therefore, preemption is enforced. Preemption is enforced for the purpose of interactiveness, for the purpose of responsiveness. Interactiveness or improve responsiveness. That is the basic reason of responsiveness. Preemption. तो आप बोलोगे सर preemption कैसे करोगे? Right? How to preempt? Preemption can be done. Preemption of the process running on CPU can be done through several factors. Like for example, I can use priority for enforcing preemption. I can use priority for enforcing preemption. Like if some priority process is running on CPU, a high priority process comes, it should preempt the running process. So preemption can be done through priority. If not priority, preemption can also be done through time. हाँ बच्चों, यहाँ पर आपको मुझे कहना है, if time is used, listen to me and answer the question. Listen to me and answer the question. Listen to me. If time is used for enforcing preemption, अगर हम time के through preempt करेंगे, then such operating systems are also called dash operating system. Fill up the dash. If time is used as a mechanism, as a parameter for enforcing preemption of the running process, then such operating systems are also called multi-programmed
टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइम शेयर्ड ओएस। इसका कॉन्सेप्ट है टाइम शेयरिंग। जैसा इनिशियल राउंड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम was basically developed as a time shared operating system. ये है time sharing. So time sharing is for the purpose of interactiveness, responsiveness. ठीक है ना? So this is about. So in this class, I would like to also make a mention that Windows family of operating system use a term called multitask, because many people keep on asking the doubt, sir, what is the difference between multiprogramming and multitasking? So यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, terminology difference है, right? Otherwise conceptual difference ज़्यादा कुछ नहीं है. Multitasking, you can take it definition as preemptive based multiprogramming is multitasking. जो word है program और task conceptually same है, conceptually same. Some people say task may have several programs. No, task and program conceptually are same. The family of operating system uses different terms, like Unix family prefer to use the word program, and then Windows family used to prefer the Microsoft family, Microsoft Windows, they prefer to use the term task. So multitasking, when you say Windows operating system is a multitask operating system, मतलब कहने का ये है, it is a preemptive based multi-program operating system. तो ये है essentially with regard to types of operating system, uniprogram, multiprogram, types of multiprogram. तो बच्चों जो implementation aspects जो हम ये study कर रहे हैं ये कोर्स में, that is basically fundamentally for a preemptive based multi-programmed operating system like Windows, Unix, Linux, Mac and so on. तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जब आप इंप्लीमेंट करना चाहोगे, यही यहाँ पे पॉइंट्स भी है, बाद में आप इसे यूज कर रेफर कर सकते हो. एंड लाइकवाइज आई हैव आल्सो मेड अ मेंशन विद रिगार्ड टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चैट बॉक्स में आप लिख के बताओगे प्लीज, बोलिएगा. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसका? दे आर टाइम बाउंड, दे ऑपरेट इन स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस. तो यहां पर प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. प्रायोरिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग will be considered here significantly very very important. Okay, that is real time operating system. उसी तरह नेक्स्ट क्लास ऑफ एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. हैंडल जॉब दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स नेटवर्क टू ईच अदर. लुक एट दैट, नेटवर्क टू ईच अदर. दे आर आल्सो टर्म्ड एज लूजली कपल्ड. एंड इसके क्लासिफिकेशंस है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू. एक बार स्लाइड्स में से पढ़ लीजिएगा आपको, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस रहना चाहिए. उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर लेकर आया हूं with regard to real time operating system and distributed operating system. ये आपके ready reference के लिए है. अब रही बात, एक important topic है for the implementation of multi-program operating system. One of the architectural requirement is called dual mode operation. Superstar topic. Superstar का मतलब ये है, काफी questions PYQs आ चुके हैं based on this topic and many people have lot of misconceptions with regard to this. तो इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे जाकर लिखूंगा, देखिएगा. एक्चुअल टॉपिक है आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट. आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट मीनिंग इन अदर वर्ड्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर सपोर्ट बोलेंगे आप, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रीएम्प्टिव बेस्ड मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. जनरली इस तरीके से मैं टॉपिक को डिस्कस करता हूं. जब आप एक मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वन ह्यूमन आर्किटेक्चर पर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द हार्डवेयर फ्रॉम द वन ह्यूमन आर्किटेक्चर? ये गेट क्वेश्चन भी था पिछले पेपर्स में. सो डू यू रिमेंबर? देयर आर थ्री थिंग्स. वही बेसिस पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा. द फर्स्ट इज फ्रॉम द इनपुट आउटपुट, दैट इज secondary storage devices, hard disk and etc. You basically expect support in the form of DMA, direct memory access. Then only multiprogramming is meaningfully supported, right? And from the memory system, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, RAM particularly,
you basically expect the support for having address translation support. Support matlab the hardware is needed to support address translation mechanism for multiprogramming. Here, third and most important thing from the processor side is called dual mode operation. Dual mode operation. At least two modes is needed from the processors for the support of implementing, for the purpose of implementing a typical multi-programmed operating system. So dual mode क्या है? Every processor in a multi-programmed operating system environment, runs in two modes or support two modes. One is called user mode and the other is called kernel mode. I am writing in short. एक है user mode और दूसरा है kernel mode. Lot of misconception, lot of doubts with regard to this. So I request you to please follow carefully and clarify your doubts. अगर कोई doubt हो तो पूछ लीजिएगा. तो चलिए सबसे पहली बात चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइएगा प्लीज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड. चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड? कम ऑन. डिफरेंस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड. जैसा नाम बता रहा है यूजर मोड, यस एटॉमिक एंड नॉन एटॉमिक, करेक्ट है. नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑल यूजर एप्लीकेशंस, user programs run in user mode and all operating system routines, operating system services, operating system processes runs in kernel mode. Point number one. Second point, user mode generally is non-atomic, preemptive. Non-atomic का मतलब है preemptive. And traditional operating system, जो multi-program traditional operating systems है, they support the kernel mode as atomic kernels बोलते हैं. Nowadays you have a concept of something called preemptive kernels happening in basically the modern operating system. हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम traditional operating system की ही बात करेंगे. So therefore atomic means non-preemptive. Non-preemptive. That means once we start the execution, we'll run till completion. While executing any operating system, we believe that there is no preemption other than for atomic kernels. Atomic kernels, non-atomic kernels or preemptive kernels are a different story altogether. Let us not talk about that. So this is just other name of kernel mode is privileged mode, protected mode. बिल्कुल सही बात है. Yes, Nishu Kumar, that is also correct what you are saying. Kernel is government, bilkul sahi. All you are able to remember everything. So the first point is all user application runs in user mode, all operating system routines run in kernel mode. That is the second important. Second important point is user mode is preemptive, kernel mode is non-preemptive. Right? The non-preemptive का मतलब ये है कि once it start, it runs till completion. That is what is meant by non-preemptive. Secondly, the third important aspect is what is the hardware और how do we know through hardware which mode the processor is running? कौन से मोड में processor presently run कर रहा है, right? और कौन से मोड में what is the convention generally? The convention is in the CPU there will be a hardware bit called mode bit. Generally, actually this mode bit is present in a special register called PSW, program status word or processor status word. This mode bit can take two values, 0, 1. 0 is like kernel mode and 1 is like user mode. So this mode bit present in the processor is going to indicate which mode the processor is currently running. Is it running in user mode or is it running in kernel mode by means of mode bit. यहीं पे वो दिखा गया है dual mode operation. देखिएगा mode bit is 0 kernel mode, mode bit is 1 user mode. Second important point is a process running in kernel mode has direct access to the hardware and full access to the machine instruction set. The operating system always runs in kernel mode. Point to be understood. Always runs in kernel mode and it has full access to the hardware. Some privileged instructions like IO operations, context switching, clearing the memory map, etc. These are all executed in kernel mode. Right? These are all executed in kernel mode. Yes. So that is a process running in user mode has no access to the hardware, has limited access to the machine instruction set.
Other examples of non-privileged instructions like reading the time of the tray, reading the status of processor, generating trap, interrupt, the software interrupt generating, that is all are examples of this. तो यहां पर अब इसके रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कशन हम करते हैं जनरली वो कॉन्सेप्ट है सिस्टम कॉल. चलिए सिस्टम कॉल एंड हाउ सिस्टम कॉल रिजल्ट्स इन चेंजिंग द मोड फ्रॉम यूजर टू कर्नल, वो थोड़ा हम डिस्कस यहां पर कर लेंगे. उसके बेसिस पर थोड़े क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, देखेंगे आगे, ठीक है ना. तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाउ सिस्टम कॉल कैन एनफोर्स द चेंज और ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड. तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा व्हाट इज सिस्टम कॉल. तो सिस्टम कॉल का सिंपल डेफिनेशन है, सिस्टम का मतलब यहां पर यह है, यहां पर जो सिस्टम लिखा गया है, सिस्टम का मतलब यह है ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स अ कॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम. काफी क्वेश्चन सिस्टम कॉल्स के ऊपर भी पिछले एग्जाम में आए, राइट. इट्स अ कॉल टू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर व्हाट, फॉर अवेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. ठीक, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स मैनेजर. Operating system is like a government providing services and we users are service users. तो उसी तरह user applications many a times require to avail or access operating system services. ऐसा कई वक्त होता है कि user applications को user programs को operating system services चाहिए. तो user program तो user mode में रन कर रहा है और operating system service है कर्नल मोड में. तो मतलब जब भी user मोड से और user application से हमें operating system की सर्विस रिक्वायर्ड होगी तो हमें मोड शिफ्ट करना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड. दैट इज कॉल्ड मोड शिफ्टिंग और दैट इज कॉल्ड डुअल मोड ऑपरेशन, शिफ्टिंग द मोड फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड. तो कैसे होगा ट्रांजिशन, हाउ इज दैट ट्रांजिशन गोइंग टू हैपन, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर. Like from the application, so every operating system will provide a well-defined list of system calls. Well-defined list of system calls. Just one of the very popular example of a system call is called fork. F-O-R-K, fork. काफी questions आए हैं previous papers में on fork system call. So here I would like to tell you, it is your responsibility to make yourself familiarized with many system calls like fork है, exec है, get PID है. List of system calls मेरे अपने रेगुलर कोर्स में मैंने काफी बड़ी लिस्ट दी है विथ रिगार्ड टू सिस्टम कॉल्स. सो बिफोर गोइंग फॉर गेट आई वुड अप्रिशिएट कि आप एक बार रिवाइज कीजिएगा लिस्ट ऑफ सिस्टम कॉल्स एंड देयर ब्रीफ फंक्शनैलिटी. इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल की ब्रीफ फंक्शनैलिटी, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर भी लेकर आया हूं, आप देख सकते हो. तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेकर अंडरस्टैंड करेंगे समराइज्ड फॉर्म में. लाइक आई एम राइटिंग ए सिंपल C++ program, C++ program. I have some simple calculations. Let us define some 3 variables ABC. I write like A is equal to 1, B is equal to 2. I write like C is equal to A plus B. And then I make a function called f of C, where I say f function is defined somewhere here. Right? I define it like this, int comma k. And I do something here. So this is also basically a function call. But this is user defined function call. User defined function call. तो दिस इज डिफाइंड इन यूजर स्पेस. तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शन जो कंपाइलर में डिफाइंड होंगे, राइट, लाइब्रेरी फंक्शन जो बोलोगे आप, याद रखिएगा पॉइंट, ये पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में. ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऑल प्री डिफाइंड कंपाइलर डिफाइंड फंक्शंस, जो फंक्शंस कंपाइलर में एज अ लाइब्रेरी इन द लाइब्रेरी दे आर डिफाइंड, दे आर ऑल एग्जीक्यूटेड इन यूजर मोड, बिकॉज कंपाइलर इज पार्ट ऑफ यूजर मोड. कंपाइलर इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दे रन इन यूजर मोड, दे डोंट रिक्वायर एनी मोड शिफ्टिंग. लेकिन if you call a function like fork is also a function, API function है आपका, right? So this is what is termed as a system call. लेकिन क्यों? Because the implementation of f is there here. उसी तरह अगर f के अंदर मैं printf कॉल करूं, function printf, this is a library function, this is library, this is not defined in operating system. So ये start होगा mode execution user mode में, ये भी execute होगा पूरा का पूरा user mode में. लेकिन जब फंक्शन फोर्क की बात आएगी, राइट, ये एपीआई कॉल जो है फोर्क, दिस इज नाइदर डिफाइंड इन कंपाइलर लाइब्रेरी, दिस इज नॉट डिफाइंड इन द यूजर मोड बाय मी एंड यू, दिस इज डिफाइंड विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल. डायग्रामेटिकली आप समझने की कोशिश करो तो ये आपका यूजर एप्लीकेशन है, राइट, टिल फंक्शन एफ द कंट्रोल वाज एग्जीक्यूटिंग इन यूजर मोड. लेकिन जैसे ही फोर्क के एग्जीक्यूशन पे आएगा कंट्रोल, तो कंट्रोल मूव होगा फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, बिकॉज
the implementation of fork is here, somewhere here in the operating system. तो ये जो ट्रांजिशन है इसे हम बोलते हैं यूजर मोड ट्रांजिशन या मोड शिफ्टिंग, शिफ्टिंग फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। काफी डिटेल डिस्कशन इसका समराइज वे में यहां पर बता दूंगा आपको। एवरी एपीआई कॉल रिटन इन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल बी कन्वर्टेड इनटू ए स्पेशल प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन और ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। उसका कुछ भी नाम देते हैं, जनरली मैं नाम देता हूं एसपीसी, सम नेम फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सुपरवाइजरी कॉल गैल्विन की टेक्स्ट बुक में डिफाइन है, सुपर दे कॉल इट एज सुपरवाइजरी कॉल, ए कॉल टू सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? So this is a privilege instruction, or you can also call it as software interrupt instruction because it is going to generate a software interrupt instruction. Because the execution of SVC at runtime, right, will make a transition by generating a software interrupt, make a transition from user mode to kernel mode. So every API call will be translated into a special software interrupt instruction, and the execution of that special software interrupt instruction will result in changing the mode from user to kernel by accessing the mode bit in the PSW, changing the mode bit from 1 to 0, user to kernel. फिर उसके बाद एक डिस्पैच टेबल मेंटेन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। सारी डिटेल्स मैं नहीं बता सकूंगा, जिन्होंने भी पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। एक डिस्पैच टेबल होगा, उस डिस्पैच टेबल के थ्रू वील गेट टू नो द एड्रेस ऑफ द सिस्टम कॉल इन मेमोरी। जब एड्रेस मिलेगा आपको, हाँ इंटरप्ट वेक्टर से मिलेगा, मैं डिस्पैच टेबल कहता हूं उसे, तो आप यू बेसिकली गेट द एड्रेस ऑफ सिस्टम कॉल एंड देन यू एग्जीक्यूट द सिस्टम कॉल रूटीन। फिर उसके बाद फिर एक एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शन का इन द लास्ट एज अ लास्ट इंस्ट्रक्शन इन द system call, and that will change the mode bit back from kernel to user, right, from privileged to non-privileged, and then we come back to the user program. तो बच्चों आपको ये कहना है कि all our contemporary operating systems, Unix, Linux, Windows, Mac, etc., they are all following this paradigm of execution. This paradigm of execution. क्या है paradigm? Paradigm ये है कि whenever any operating system service is needed, mode shifting changes, mode shifting takes place, changing the mode from user to kernel, back from kernel to user. ये है mode shifting का concept, ठीक है? So with regard to this, एक case study आपने पढ़ना होगा with regard to fork system call. Summarizingly मैं यहाँ पर ये कहूँगा, fork will result in create a new child process. Create a new child process. Fork जब आप एग्जीक्यूट करोगे, it will result in creating a new child process. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम्स में आऊंगा मैं, वहां पर कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे फोर्क के। तो देखिएगा, इफ आई जस्ट राइट printf hello and if I execute this program in an operating system like Unix, Linux or Windows, when I execute this, हम सबको पता है कि कितने बार हेलो मैसेज आएगा? एक बार आएगा, क्योंकि एक प्रोसेस क्रिएट होगा। अदर देन दैट, अगर मैं printf से पहले, बिफोर printf, if I write fork and then printf hello, how many times the message hello get printed? Message hello get printed twice, 2 बार होगा। क्यों? इसकी फंक्शनलिटी ऐसे आप अंडरस्टैंड करो, ये मान लीजिएगा दिस इज आवर ओरिजिनल पेरेंट प्रोसेस। This is having, we'll number the statements 1 and 2. 1, 2. First statement है fork, second statement है print. पैराडाइम समझने की कोशिश कीजिएगा। So when I execute fork for the first time, इसका पैराडाइम ये है कि it will create a new process. ये है child process. प्रोसेस को जनरली हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे प्रोसेस। फोर्क की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फोर्क की फिलॉसफी आइडियोलॉजी ये है कि it will create a new separate process in the memory and replicate the code. replicate मतलब कॉपी। जो भी प्रोसेस का टोटल कोड है वो एज इट इज कॉपी करेगा इन द एड्रेस स्पेस ऑफ चाइल्ड। तो मतलब चाइल्ड प्रोसेस में भी I will have fork, I will have print, as it is कॉपी होगा कोड, एड्रेस स्पेस इज कॉपीड, रेप्लिकेशन होगा। लेकिन एग्जीक्यूशन इन चाइल्ड विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग एज इन पेरेंट। जैसा पेरेंट में एग्जीक्यूशन शुरू से होगा, चाइल्ड में शुरू से नहीं होगा। पैराडाइम ये है, एग्जीक्यूशन इन चाइल्ड विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर फोर्क। एग्जीक्यूशन इन चाइल्ड विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर फोर्क।
फोर्क के नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मतलब पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चों, फोर्क यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा चाइल्ड, फोर्क एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट, मींस इट इज गोइंग टू प्रिंट द मैसेज हेलो एंड द कोड ऑफ चाइल्ड इज ओवर, सो इट टर्मिनेट्स। फिर पेरेंट पे कंट्रोल आएगा, पेरेंट हैज अर्लियर एग्जीक्यूटेड फोर्क and then it will execute print, so message hello will come twice. So when you execute this program, message hello comes 2 times, one from parent, one from child. अब यहां पर बच्चों को डाउट होता है, सर जब आप पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करोगे तो क्या शेयर रहेगा, शेयरिंग कुछ नहीं रहेगी, the processes will not share anything, it's a separate address space, this is a separate address space. दोनों कोई भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहा हूं। Either parent may run first or child may run first when child process is created. They can run in any order. They are independent processes. They are independent processes. कोई भी प्रोसेस पहले कंप्लीट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस लास्ट में कंप्लीट हो सकता है। Anybody can complete first, anybody may complete last. So there is no hard and fast rule who should complete first or who should complete last. It all depends on the scheduling mechanism of operating system. It will all depend on that. हाँ, आप अपने कुछ तौर तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है, सिस्टम कॉल्स है, जिससे आप ये चाहो, अगर आप ये कह रहे हो, राइट, कह रहे हो कि पेरेंट शुड वेट until child terminates, then you can basically use some system call to do that. There is a system called wait. So in the parent process, if I use system called wait, then basically parent will wait until child terminates. तो आप ऐसे मैकेनिज्म से आप कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So this is the paradigm. Second important point बच्चों, अगर मैं ये कहूं यहां पर, in my program, listen to me and answer the question. In my program segment, if I write fork 2 times, बोलिएगा, and then I have a statement printf hi or hello, बोलिएगा, when I run this segment fork 2 times, how many times the message hi gets printed? Come on, write down in the chat box. So this program will result in creating a total of 4 processes, total 4 processes. तो मतलब न्यू और चाइल्ड प्रोसेसेस कितने रहेंगे, -1, न्यू और चाइल्ड प्रोसेसेस रहेंगे 3, because one original is parent. This is the rule or paradigm, right? So therefore the rule or paradigm is that, let me write it down as a point, if n forks are used in series का मतलब है one after another sequentially, fork n times अगर आप यूज करोगे, जैसा यहां पर 2 times है, तो n times, if there are n fork statements are used in series, right, then it will create a total of 2 power n processes, and among them 2 power n minus 1 child processes. ये है आपका कॉन्सेप्ट, There were many questions based on this ideology. Yes, some problem we'll take up, Bhavya now. We'll take up some problems on this. Don't worry. Total processes are 2 power n and number of child processes are 2 power n minus 1. 2 power n minus 1. Now, before taking up the problem, I would like to touch upon the next point also. Please remember, the next point is that return value of fork. Return value of fork. By means of return value of fork, you can distinguish which is parent, which is child. Am I right? Every fork system call or every system call, including fork, will return some value. Right? If it is returning negative value, it is a failure. Otherwise, if it is successful, then it will return either 0 or 1. So here we assume, without losing any generality, that it is always successful. So if it is always successful, it may return either 0 or 1. In the process, if it returns 0, अगर जो process है उसमें return value 0 है, that process is identified as child. And if it returns 1, then that process is identified. Well, 1 का मतलब greater than 0, just for simplicity, greater than 0, parent process. Actually, it will be the ID of the child process, greater than 0. So therefore,
greater than 0 parent process, equal to 0 child process. Based on that एक simple problem यहाँ पर लूंगा and everybody should try to tell me what is the answer for this. What is the answer for this? Like for example, I have variable a, b, c. I initialize them. C is equal to 0, b is equal to 1 and a is equal to 2, right? I write like a plus equal to, b plus equal to, c plus equal to 3. I say print the values of a, b, c. Okay? And then I say if fork is equal to 0, fork equal to 0, a plus equal to plus b plus plus 2, right? And c plus print ABC. That's it. Tell me what is the output of this program. Tell me what is the output of this program. Come on बच्चों, solve कीजिएगा. Solve कीजिएगा and let me know. What will be the output of this program? देखिएगा यहाँ पर C is 0, B is 1, A is equal to 2. Execution will go from right to left because this is assignment statement. C is equal to C plus 3. तो C की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पर हम लिखेंगे C की वैल्यू बनेगी, let me write, this is a variable C, this is a variable B, this is a variable A. So C is equal to C plus 3, C is 0, so C will become 3. 3 is added to the current value of B, B will become 4. 4 is added to the current value of A is 2, so therefore A will become 6. So the first output will come as A is 6, B is 4, C is 3, 6, 4, 3. First output. First output. इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, देखिएगा, if fork equal to 0, if fork equal to 0, तो मतलब अगर आप डायग्रामेटिकली समझो, this is my original parent process, this is my original parent process, and because of the fork it has created this child. Now both child and parent will have the variable values a, b, c. Look at this, a, b, c in parent. So now this was in the parent, so because of this updation which is happening in parent, so the value of a has become 6, the value of b has become 4, the value of c has become 3, the value of c has become 3. Now when I say fork, child has been created. यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि चाइल्ड में भी 3 वेरिएबल्स रहेंगे विद द सेम नेम ए, बी, सी, डिफरेंट वेरिएबल्स, सेम शेयर नहीं करेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. At the time of fork, point of understanding, at the time of fork, whatever are the current values of ABC, that will be copied into child variables ABC, not the original ones. जो original ones है वो नहीं रहेंगे, updated values will be copied. So A will be copied as 6, B will be copied as 4, C will be copied as 3. These values I am going to evaluate this expression. So ये expression क्या है? Plus plus B, pre-increment. तो B की value increment होगी, B will become 5. 5 plus 2, 7. 7 is added to the current value of A. 7 plus 6, 13. A will become 13. A will become 13. Very good. Many people are giving correct answer. Then C plus plus, C will become 4. C will become 4. So when I say print the values of ABC, ABC values are getting printed in child, and that will be printed as 13, 5 and 4. I'm sure many people gave me the correct answer. So in the child process, the values of ABC are 13, 5 and 4, and in the parent process, the values of ABC are 6, 4, 3 only, no change. No change. So that means if I would have written here else means it is greater than 0. If I would have printed the values here, print ABC. If I would have printed the values of ABC here, else मतलब parent. तो क्या print हो गए? यहाँ पर जो print होगा ना, original values of ABC 643. फिर से 643 print होगा. यहाँ पर जो print हो रहा है 1354. This is output of the program. ये एक simple paradigm है to understand the difference between parent and child. तो ये basis पर questions आए हैं. Let us try to see some PYQs now. So fork system call का different है. चलिए practice questions. Come on, get up. Fold your hands and unfold your hands and try to answer the questions.
ठीक है ना, वन बाय वन। रेडी रेडी, आर यू रेडी बॉयज एंड गर्ल्स? शैल वी टेक द क्वेश्चंस? रेडी हो आप आंसर करने के लिए? कम ऑन, शैल वी स्टार्ट? ओके, वेरी गुड, चलिए वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, सम पीवाईक्यूज को मैंने मॉडिफाई किया है बच्चों, सो डोंट थिंक दैट दे आर एग्जैक्टली पीवाईक्यूज एज फॉलो, तो कुछ मॉडिफाई किया हूं, यू हैव टू बी केयरफुल। कम ऑन, आंसर मी द फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर मी द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one or more of the following options guarantee that a computer system will make a transition from user mode to kernel mode? चलिए बताइए, MSQ, MSQ, MSQ है। People are saying only system call. Guarantee, this is MSQ question. Guarantee का मतलब है compulsory. Guarantee का मतलब है compulsory. ये PYQ है। फंक्शन कॉल, नॉर्मल यूजर लेवल फंक्शन कॉल विल नॉट जनरेट एनी सिस्टम कॉल। मैलॉक जो फंक्शन है इट इज मेंट फॉर मेमोरी एलोकेशन, तो जनरली होना चाहिए सिस्टम कॉल इसमें, लेकिन मैलॉक की फंक्शनैलिटी ये है कि एवरी टाइम यू कॉल मैलॉक, प्लीज लिसन टू दिस, एवरी टाइम यू कॉल मैलॉक सिस्टम कॉल विल नॉट बी जनरेटेड। फर्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे, जब आप मेमोरी एलोकेशन होगी और कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी लेके आएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आप मैलॉक करो तो सिस्टम कॉल की जरूरत ना होगी। मतलब it does not guarantee every time, so therefore we will not select this option. जब भी पेज फॉल्ट होगा, जब भी पेज फॉल्ट होगा तो आपको सर्विस करना पड़ेगा। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके लिए जरूर आपको चेंज करना पड़ेगा यूजर मोड टू कर्नल मोड, ये होगा। सिस्टम कॉल always will result in changing the mode from user to kernel, so therefore as many people said the correct answer is C and D. correct answer is C and D. very good, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है, देखिएगा उसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। Which of the following will involve a system call? Which of the following standard C library function will always invoke a system call when executed from a single threaded process in a Unix or Linux environment? कौन से यूजर लेवल API कॉल से ये which will result in generating a system call? कौन सा एक्टिवेट करेगा? Exit to terminate the program will always activate, क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जिट करेगा, प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा, so this will definitely, right? मैलॉक ऑलवेज, मैंने कहा, देखिएगा ये पॉइंट्स आपको गौर करना होगा, क्वेश्चन में ऑलवेज पूछा जा रहा है। मैलॉक हमेशा ऑलवेज नहीं करेगा, ऑलवेज नहीं करेगा, सो ये नहीं होगा। स्लीप, यस इट विल ऑलवेज, बिकॉज स्लीप करने से आप ब्लॉक होगा, प्रोसेस ब्लॉक होगा। ब्लॉकिंग ऑफ द प्रोसेस इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जनरेट करेगा। str लेंथ इज नॉर्मल लाइब्रेरी कॉल, ये नहीं होगा। तो जिन्होंने भी कहा आंसर B and C, sorry A and C, that is correct, that is correct. String length is a normal user defined or compiler defined routine, it does not need any system call, ठीक है ना? तो therefore the correct answer for this is A and C, A and C। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका मैं कुछ टाइम दूंगा आपको, 2 मिनट का टाइम दूंगा। I will start a poll and you are going to tell me the answer for this, you are going to tell me the answer for this। poll देखेंगे कहां पर है। Single choice question, I'm starting the poll for 45 minutes, 45 seconds. Start the poll, come on, do it boys and girls, work out the question, I'll just come within 2 minutes।
तो व्हाट इज आंसर? ओह मेरे माय गॉड, एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। देखिएगा बच्चों, लेट्स ट्राई टू रिव्यू दिस क्वेश्चन। These are all these are valid C program. Main function int I equal to 0 less than 10, मतलब this will be executed 10 times. This will be executed 10 times. सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। चलिए, so if I want to equal to 0, मतलब this will be executed for even numbers like 0, 2, 4, 6, 8. So therefore कितने होंगे? 5 बार एग्जीक्यूट होगा। So this will be executed for 5 times. क्या एग्जीक्यूट होगा 5 times? 4। तो अगर 5 times एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमने क्या कहा था? How many new or child processes will be created? 2 power 5 minus 1. 2 power 5 is 32. 32 minus 1. 32 minus 1 is 31. So that's why the answer is 31. बिल्कुल सही। चलिए, इसका जल्दी आंसर बता दीजिएगा प्लीज। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर बता दीजिएगा प्लीज। देखेंगे कितने बच्चे सही आंसर करोगे इसका, देखेंगे कितने बच्चे सही बताएंगे आंसर। चलिए, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। सिंगल आंसर टाइप, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड का पोल है, स्टार्ट। कम ऑन, डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड, पीपल आर डूइंग वेरी वेल। कुछ बच्चे बी भी लिख रहे हैं आंसर। सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा प्लीज। चलिए, द करेक्ट आंसर इज 10 and 11, A. Some people have given, majority is A correct, that is fine. So सुनिएगा यहां पर क्या हो रहा है, देखेंगे। We'll try to understand diagrammatically the concept of this question. The concept of this question. This parent process. Originally, parent has a variable by name A with value 10. Please try to understand those who have misconception. देखिएगा यहाँ पर. When I say fork, so child is created. Child is created. Child will have replicate copy of A. ये जो variable है इसकी एक separate copy बनेगी with the value 10. Then equal to 0 मतलब ये जो part execute होगा, this will be executed only by child. Parent execute नहीं करेगा, parent execute नहीं करेगा, parent execute करेगा सिर्फ next statement. तो A is incremented by 1 in child process. देखिएगा parent value will remain the same. तो यहां पर जब हम print करेंगे, the child will print the value of A as 11. Parent will print, parent will execute, parent will not execute this part. Parent will execute only print. तो जब print parent में execute होगा, what is the value of A here? 10. So the output will be 10 and 11 or 11 and 10 in any order. 10 and 11 in any order. Either 11 may come first or 10 may come first. मैंने क्या कहा? Parent and child will execute in any order. ठीक है ना? तो ये है आंसर A इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस के लिए। चलिए, भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा प्लीज। यहां पर जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सी 7 and 8 में कंफ्यूजन होता है। उसके लिए आपको क्वेश्चन स्टडी करना होगा। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? न्यू प्रोसेसेस। न्यू प्रोसेसेस, न्यू प्रोसेसेस का मतलब है चाइल्ड प्रोसेसेस। तो आंसर आपका आएगा 7। हाँ, अगर न्यू प्रोसेसेस के बजाय अगर हम पूछते हाउ मेनी टोटल प्रोसेसेस अगर पूछते, तब आपका आंसर होता 8। तब आपका आंसर होता 8। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन रीड करना इंपॉर्टेंट है, तो डोंट बी इन हरी। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन आपके सिली मिस्टेक से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल विद दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये देखिएगा, जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं था ये क्वेश्चन में, देखिएगा प्लीज एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस। टेल मी द आंसर फॉर दिस। आई एम स्टार्टिंग द पोल फॉर 30 सेकेंड्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। बहुत परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसा ही करिए। आगे और भी कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन तो और अच्छे रहेंगे।
ठीक है, अच्छे सोर्सेस से प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपको, बाद में होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो आपने करना है आपको। चलिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इसका आंसर बनेगा सी। मेजॉरिटी 93% आर करेक्ट। जो बी 5% है, डी 1% है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज हैव ए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। यहां पर पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये एग्जीक्यूट होगा n टाइम्स, तो n टाइम्स वर्क एग्जीक्यूट होने से टोटल प्रोसेसेस बनेंगे 2 पावर n, इंक्लूडिंग पेरेंट 2 पावर n, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बच्चों बात होगी प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स की, प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स। फिर उसके बाद प्रोसेस कॉन्सेप्ट में हम मल्टी प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस लेंगे एंड अदर थिंग्स। फिर उसके बाद हम जाएंगे सीपीयू शेड्यूलिंग पर, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग के बाद हम जाएंगे सिंक्रोनाइजेशन पर। चलिए, प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स। यहां पर फंडामेंटली वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। क्विकली ओरली बोलूंगा, स्लाइड में आप बाद में अपने तौर पर अंडरस्टैंड करोगे। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा। डेटा इज ऑफ 2 टाइप्स, हमने कहा स्टैटिक डेटा, डायनेमिक डेटा। स्टैटिक का मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल जो आप C++ में यूज करते हो वो स्टैटिक मतलब यहां पर ये नहीं है। स्टैटिक का मतलब है स्टैटिक एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ मेमोरी जो होगी स्टैटिकली होगी, मतलब उसकी साइज प्री डिफाइंड रहेगी और वो एलोकेशन जो होगा बिफोर रन टाइम होगा। सो बिफोर रन टाइम एलोकेशन, फिक्स्ड साइज, नोन साइज इज स्टैटिक एलोकेशन। अननोन साइज, वेरिएबल साइज, and if memory allocation is taking place at runtime, that is called runtime allocation. That is called runtime allocation or dynamic allocation. ये dynamic allocation है। चलिए, it resides in secondary memory, it is passive, it is not allocated any resources। ये है program। Program is always on disk, process is always in memory। Process is alive, active, program is passive on disk because program does not use any resources। राइट, प्रोसेस बोलिए, टास्क बोलिए, ऐप बोलिए, दीज आर ऑल द रिलेटेड टर्म्स। एप्लीकेशन, दीज आर ऑल रिलेटेड टर्म्स। प्रोसेस, टास्क, एप्लीकेशन, दीज आर ऑल रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिमस टर्म्स। सो प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम को आप मेमोरी में लाओगे तब इट बिकम प्रोसेस। it is utilizing the resources of the system, it is active entity, it is a locus of control, right? It is like animated spirit. These are the things that we have studied with regard to process. So बच्चों, काफी important term है। Program under execution, it resides in the main memory, it is always active and dynamic. The operating system allocates resources to the process for its execution. There is no concept of process without program. Process create होता है program से, ठीक है ना? So that is the relationship between them. उसका structure यहाँ पर आपको बता दूं, जो काफी important है। Like if I say this is the process structure in memory, you can put like a text section here, text or code. Then you will have like static data, global variables, and all static data will happen from here, right? And then secondly you have stack, a runtime stack, which can grow and shrink. Sorry, यहाँ पर heap बोलेंगे, heap portion, dynamic data, heap, grow and shrink. And then you have runtime stack. This is meant for storing activation records of the functions. It can grow and shrink at runtime. This is the process structure in memory. Important point is this: code or text section, data section, heap section, stack. ये important components है process के in memory. Interviews के perspective से भी generally मैं students को कहता हूँ कि this is important part. Heap is that area of memory from where we allocate space dynamically at runtime. जैसा अगर आप malloc यूज करोगे ना, malloc, या फिर C++ में अगर आप बात करोगे like new function, तो जब मेमोरी allocate होगी ये heap से allocate होगी। आपके जो जितने भी local variables रहेंगे, formal parameters, local variables of the function, they will be in runtime stack. Global variables or static variables of C++, that will be from the static data portion. ये है आपका process structure. Second, process as an abstract data type will be associated with attributes. Tell me in the chat box quickly, the attributes of a process are stored in dash. Come on, fill up the dash. बोलिएगा, attributes of a process are stored in dash. Come on, fill up the dash.
attributes or characteristic properties are stored in PCB, process control block. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का और एक नाम है प्रोसेस डिस्क्रिप्टर, प्रोसेस डिस्क्रिप्टर। द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन केप्ट इन पीसीबी, जो पीसीबी का टोटल इंफॉर्मेशन कंटेंट रहेगा उसे हम जनरली बोलते हैं प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट। Content of PCB is called process context. Some people even call process environment. इसी वर्ड process context से जो टर्म यूज किया गया है CPU शेड्यूलिंग में, context switching, context switching जो वर्ड है, it comes from the process context kept in PCB. और context switching में आपको पता है PCBs इन्वॉल्व होते हैं, saving PCB, loading PCB, context switching. So that's why the word context is nothing but content of PCB, content of PCB। क्या क्या रहेगा कंटेंट? प्रोसेस देखिएगा, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन रहेगा, लाइक प्रायोरिटी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी लिमिट्स, लिस्ट ऑफ फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, ऑल दैट। द एग्जैक्ट लिस्ट विल वेरी फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने ओन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रहेंगे। बाय एंड लार्ज इन जनरल दीज आर द एट्रीब्यूट्स, मतलब हर प्रोसेस के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, हर प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होंगे। Every process will have its own attributes stored in PCB, मतलब PCB is always associated with the process। जब भी प्रोसेस की बात होगी मेमोरी में, PCB रहेगा प्रोसेस का। It is a representative of process. It is just like Aadhaar card of the process, to be more precise. It is like just like Aadhaar card. Robin Sharma, I told you context switching term CPU scheduling में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, be careful। तो चलिए यह है PCB। All the attributes of process are stored in PCB and this feature of okay, every process has its own process control block। वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मैंने आपको कहा था। तो अब ये जो attributes है बच्चों, based on these attributes I would like to project to you, I would like to tell you that one of the important attribute of the process is called process states, process states। During its lifetime the process goes from one state to another state। जैसा कि हमारी ह्यूमन लाइफ है, कई स्टेट्स है। फर्स्ट वी हैव ए न्यू बॉर्न एंड देन ए चाइल्ड एंड देन अडल्ट एंड देन ओल्ड एज, लाइक दीज आर द स्टेट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसी तरह प्रोसेस के भी अपने स्टेट्स होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच द प्रोसेस कैन बी इन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम? लेट अस ट्राई टू पेन डाउन हियर। द डिफरेंट स्टेट्स आर न्यू, रेडी, रनिंग, राइट, ब्लॉक, सस्पेंड। यू कैन हैव सस्पेंड, रेडी, सस्पेंड, ब्लॉक। मैं एक ही स्टेट लिख रहा हूं सभी को मिलाकर, सस्पेंड एंड देन टर्मिनेट, एंड देन टर्मिनेट। एंड द ट्रांजिशन जो प्रोसेस जो ट्रांजिशन करेगा गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज गिवन बाय ए वेल नोन डायग्राम कॉल्ड प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। The diagram illustrating the changes in the states of the process going from one state to another state, that is called process state transition diagram। Every multi-programmed operating system will have its own process state transition diagram। Every operating system, I would say, whether it is multi-programmed, uni-programmed, हर एक का अपना process state transition diagram रहेगा। काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं process state transition diagram पर, conceptual questions हम थोड़े बहुत यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्विकली एक डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। एक बार स्टडी कर लीजिएगा डायग्राम, एक बार स्टडी कर लीजिएगा डायग्राम। डायग्राम थोड़ा छोटा है, यहां से समझाने की कोशिश करूंगा। दिस इज न्यू क्रिएटेड, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग द प्रोसेस, इट विल गो टू रेडी। रेडी में मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी रेडी स्टेट, सो वन ऑफ द प्रोसेस विल गेट डिस्पैच ऑन टू सीपीयू। अगर जो प्रोसेस रन कर रहा है सीपीयू पर कंप्लीट होगा तो टर्मिनेट पे जाएगा, नहीं अगर इट रिक्वायर्स आईओ इट विल कम टू ब्लॉक स्टेट, ब्लॉक स्टेट से बैक टू रेडी स्टेट। अगर रनिंग प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो रहा है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी और टाइम, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी और टाइम, देन इट विल कम बैक टू रेडी। अगर आप सस्पेंड कर रहे हो तो रेडी स्टेट से सस्पेंड हो रहा है तो सस्पेंड रेडी, फिर बैक रिज्यूम टू रेडी स्टेट। अगर ब्लॉक स्टेट से अगर आप सस्पेंड कर रहे हो तो सस्पेंड ब्लॉक, अगेन रिज्यूम, इट विल कम टू वेटिंग स्टेट। अगर यहां पर आईओ ऑपरेशन ब्लॉकिंग हो जाएगी देन यू कम बैक टू सस्पेंड रेडी। ये डायग्राम हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। ये डायग्राम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर कोई ना कोई भी स्टेट पर अगर किसी किस्म का कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई, आई विल क्लैरिफाई। अगर कोई भी डाउट हो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में
तो प्लीज आस्क बिफोर आई टेक अप प्रॉब्लम सॉल्विंग. सस्पेंड मीन द प्रोसेस विल गो फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क. सस्पेंड का मतलब गोइंग फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क. सस्पेंशन क्यों करते हैं? सस्पेंशन करते हैं ड्यू टू परफॉर्मेंस रीजन. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, परफॉर्मेंस रीजंस पर यू सस्पेंड द प्रोसेस. सस्पेंड का मतलब स्वैप आउट, सस्पेंड का मतलब रोल आउट. यू रोल आउट द प्रोसेस, स्वैप आउट द प्रोसेस फ्रॉम रनिंग फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क. दैट इज कॉल्ड सस्पेंड. सस्पेंड ब्लॉक टू सस्पेंड रेडी बिकॉज द प्रोसेस इज सस्पेंडेड. यहां पर अगर प्रोसेस आईओ ऑपरेशन अगर समहाउ कंप्लीट करेगा तो इट इज रेडी बट सस्पेंडेड, सो देयरफॉर इट कम टू सस्पेंड रेडी. रन टू रेडी बिकॉज ऑफ प्रीएम्पशन, बिकॉज ऑफ प्रीएम्पशन. यह है. कैन ए प्रोसेस गो फ्रॉम रेडी टू सस्पेंड? हाँ, रेडी टू सस्पेंड जा सकता है. देखिएगा यहां पर है ना, रेडी टू सस्पेंड. The most desirable state for the process to get suspended is from ready state. ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा. नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा टॉपिक ऑफ शेड्यूलर्स. देखिएगा टॉपिक ऑफ शेड्यूलर्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस लेने से पहले शेड्यूलर्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे बच्चों. सुनिएगा, शेड्यूलर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक डिसीजन. तो जब आप स्टडी करोगे स्टेट डायग्राम और क्यूज की बात करोगे, रेडी क्यू, ब्लॉक क्यू. रेडी स्टेट मतलब रेडी क्यू, ब्लॉक स्टेट मतलब ब्लॉक क्यू. एक क्यू होना पड़ेगा जहां पर लिस्ट ऑफ पीसीबीज रहेंगे फॉर द प्रोसेसेस विच आर इन रेडी स्टेट. हम वो डेटा स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेडी क्यू. जो प्रोसेसेस ब्लॉक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, उसकी जो अपनी क्यू होगी हम उसे ब्लॉक क्यू बोलेंगे. सो आई हैव रेडी क्यू, ब्लॉक क्यू. उसी तरह डिस्क पर सस्पेंड क्यू होगी, जो प्रोसेसेस सस्पेंड होंगे. तो ये क्यूज पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स रन करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, जनरली हम उसे बोलेंगे शेड्यूलर. शेड्यूलिंग का मतलब है बच्चों मेकिंग ए डिसीजन. So if you see this diagram, there are multiple places where we are making decision. We are making decision on ready queue. We are making decision on block queue. We are making decision on suspend queue. We are making decision on job queue or input queue. तो उसी तरह we have three types of schedulers to make these decisions. One is called long-term scheduler. Generally, I write in short LTS. It is responsible for the creation and bringing of new processes, new programs into main memory from disk. From disk. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. जितने भी प्रोग्राम्स को आप मेन मेमोरी में लाना हो, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. राइट? दैट इज व्हाई इट इज सेट टू कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. गेट क्वेश्चन है, हु कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? ऑप्शंस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिस्पैचर एक्सेट्रा. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बिकॉज अगर उस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्टॉप्स ब्रिंगिंग न्यू प्रोग्राम्स, तो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो जाएगी. अगर वो ज्यादा प्रोग्राम्स इंजेक्ट कर रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी. तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मीडियम टर्म शेड्यूलर इट इज आल्सो कॉल्ड स्वैपर. दिस शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन. यहां पर लिख रहा हूं प्रोसेस सस्पेंशन एंड रिजम्पशन. मतलब जब भी आपको प्रोसेस सस्पेंड करना हो और रिज्यूम करना हो, जब भी प्रोसेस को आप स्वैप आउट स्वैप इन करना हो, दैट इज डन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्वैपर. इट स्वैप आउट द प्रोग्राम्स. उसी तरह है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. उसी तरह है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. व्हाट डज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डज? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑपरेट्स ऑन रेडी क्यू. इट ऑपरेट्स ऑन रेडी क्यू, right? And it is responsible for scheduling the process onto CPU, making the transition going from ready to run. जब आपका CPU आइडियल होगा, some process has to run on CPU. हमें डिसाइड करना होगा कौन सा प्रोसेस रन करेंगे. So that is decided by short-term scheduler. That is why short-term scheduler is also termed as CPU scheduler. Short-term scheduler is also termed as CPU scheduler. Short-term scheduler is also termed as CPU scheduler. जो हमारा next topic है CPU scheduling, that is based on short-term scheduler. Design of short-term scheduler. एक और component है. So summarizingly फिर से एक बार कह रहा हूं, long-term scheduler brings new programs from disk to memory by creating processes out of it. Second, medium-term scheduler is responsible for process suspension and resumption. Third, short-term scheduler is responsible for scheduling the ready process onto CPU. That's why it is called CPU scheduler.
तो कौन सा रेडी प्रोसेस शुड रन ऑन सीपीयू, दैट इज डिसाइडेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर लास्ट में एक कंपोनेंट है, काफी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस पेपर्स में, दैट इज कॉल्ड डिस्पैचर। कैन यू प्लीज राइट डाउन व्हाट इज डिस्पैचर, व्हाट इज अ रोल, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पैचर, एनीबॉडी? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। निशु कुमार, राकेश जोशी, प्लीज टेल मी। फरहान खान, सैयद अहमद, तुषार सिसोदिया, टेल मी व्हाट इज डिस्पैचर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन शॉर्ट। बिल्कुल सही बात, dispatcher is responsible for carrying out the activity of context switching. Context switching. Dispatcher is responsible for carrying out the activity of context switching. What is context switching? Diagram लेकर understand करेंगे. Please understand. See here on board. Imagine, for example, this is my ready queue, and let's imagine this is the CPU. The CPU. And let's also assume here for simplicity that this is some device and its corresponding device queue. एक डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। So this is ready queue. I have some processes, PCBs here, PI, PJ, PK, PL. This is CPU. Some process PR is running on CPU. Understand context switching diagrammatically. This PR. And let's say this is our disk, input output device. And let's say this is called disk queue. और यहां पर disk queue में we already have some processes. Let us imagine a scenario which is too much interesting to understand the philosophy of context switching. Please understand. Imagine after some time this process need to perform IO operation on this device. तो हमें क्या करना होगा, ये process का PCB अब जो running state पर है हमें यहां सेव करना पड़ेगा, हमें यहां सेव करना पड़ेगा। ये कौन सेव करेगा, ये सेव करेगा डिस्पैचर, यहां पर सेव कर देगा PR। तो CPU has become idle, देखिएगा CPU has become idle because of this activity. CPU has become idle. इसके बाद CPU scheduler या short term scheduler run करेगा to decide which ready process should run next. देखिए हम यहां पर assume करेंगे, let us imagine short term scheduler decided that PJ should run. तो dispatcher क्या करेगा, the context BCB of this process PJ gets scheduled onto CPU. PJ starts running on CPU. PJ starts running on CPU. So who will load this context? Who will load this PCB onto CPU? That is done by dispatcher. तो हम बोलेंगे यहां पर context switching has taken place. Why? Earlier the context of PR was active here. Now the context of PJ is active. So PR से PJ switch हो गया है, context switch हो गया है. This activity is called context switching. And this activity of saving the PCB and loading the PCB of the next ready process to run on CPU is called context switching, and the time taken for context switching is called context switch time. Context switch time. इसका और एक नेम है dispatch latency. Dispatch latency. Another name of context switching is dispatch latency. Context switching time is considered to be an overhead क्योंकि यूजफुल टाइम नहीं है, दिस इज नॉट यूजफुल टाइम। ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम CPU is busy, but busy with dispatcher, not with user process. So that's why it is an overhead. Some people get confused there. During context switching, what is the state of CPU? They say idle. No, idle. It is idle नहीं है. It is busy with dispatcher. Dispatcher work कर रहा है. Otherwise अगर idle होगा तो फिर कौन लोड करेगा, कौन सेव करेगा? So it is busy with dispatcher, but not doing useful activity, overhead activity. Yes, so that's the point. तो चलिए बच्चों, be ready to take up practice questions on this, some logical, theoretical, reasoning questions on process concepts. Come on, let's start. First question, very simple, starting with dispatch latency. Very simple question. Come on, boys and girls, tell me the answer for this. Piyush Agarwal, it will be saved either in block queue or ready queue or whichever queue. कोई भी queue में save करेगा depending on the requirement. Piyush Agarwal. What is the answer for this, boys and girls? Boys and girls, what is the answer for this? Dispatch latency is what? The speed of dispatching a process from running to ready? No, it is not speed. The time of dispatching a process from running to ready state and keeping the CPU idle, ये तो total contradictory है। कई बच्चे आंसर B बोल रहे हैं, B is गलत, B is गलत, B wrong है। CPU idle रहेगा क्या dispatching पे? Correct answer is C.
Some people have given correct answer. The time to stop one process, stop का मतलब terminate नहीं है, यहाँ पर process को हटाना है, उसके execution को रोकना है. The time to stop one process and start running another one, that is dispatch latency, context switching time. ये confusion है, right? Idle कहाँ रहेगा? Time of dispatching a process from running to ready state and keeping the CPU idle. ये क्या बात हुई? Total उल्टा concept हो गया. चलिए next question. Come on, answer कीजिएगा please. Tell me the answer for this question, boys and girls. Practice question है, PYQ नहीं है ये. Practice question है, this is not PYQ. Come on, work out. What is the answer for this question? What is the answer for this? चलिए start करेंगे. The operating system and the other processes are protected from being modified by an already running process. थोड़ा सा डायग्राम लेकर अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, ताकि आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो. Let's see. So this is operating system loaded in memory. I have some processes present in memory. Let's say P1, P2, P3, P4. Let us imagine running process is some process. This CPU. Let us assume that P2 is running on CPU. Boys and girls, please understand the question diagrammatically. P2 is running on CPU. Running process is P2. चलिए read करेंगे question. The operating system and other processes P1, P3, P4, other processes P1, P3 and P4 are protected from being modified by an already running process P2. ये कैसा होगा protection? How is it going to be done? They run at different time instance and not in parallel. गलत बात, कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शन का. They are in different logical addresses. No, it is not like that. They use a protection algorithm in the scheduler. It is also not like scheduler is not responsible once a process P2 is running on. So scheduler can never control. Every address generated by the CPU means every address generated by P2 is being checked against the relocation and limit parameters. तो अगर वो लिमिट में हो या बेस रजिस्टर और लिमिट के बीच में हो तभी हम अलाउ करोगे, वरना हम नहीं करेंगे. तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर प्रोटेक्शन, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शन. सो दैट इज हाउ वी बेसिकली एंश्योर दिस. नेक्स्ट, चलिए ये गेट क्वेश्चन है बट स्लाइटली मॉडिफाइड. कम ऑन, आंसर मी प्लीज. Answer me please. Consider the following statement about process state transition for a system using preemptive scheduling. Understand करने का पॉइंट यह है कि preemptive scheduling, a running process can move to ready state in preemptive scheduling. Yes, preemption होगा तो ready state में जाएगा. A ready process can move to running state in preemptive scheduling. Yes. A block process can move to running state. It will never happen. A block process can move to ready state. Yes. 1, 2 and 4. Where ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, खुशी की बात है. हाँ, इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. इसका आंसर बता दीजिएगा प्लीज. आई एम स्टार्टिंग अ पोल. 30 सेकेंड, सिंगल चॉइस. कम ऑन. Yes, very simple question. The maximum number of processes that can be in ready state for a computer system with n CPUs. अगर आपके पास n CPUs हो तो ready queue में कितने processes रह सकते हैं? Is it dependent on n? नहीं, it is not dependent on n. It is never dependent. Running process will depend on number of CPUs. अगर मेरे पास 4 CPUs हो तो maximum 4 running process हो सकते हैं, लेकिन ready state पर कोई ऐसा condition नहीं है. It is not dependent on n. So therefore the correct answer for this is D.
तो आई थिंक मेजॉरिटी गिव द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ चलिए, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम। come on, tell me the answer for this. Very good. Which is the correct definition of a valid process transition in operating system? Wake up, ये ब्लॉक में होगा wake up, तो ब्लॉक से रेडी टू रनिंग नहीं जाएगा, दिस इज रॉन्ग। डिस्पैच रेडी टू रनिंग दिस करेक्ट। डिस्पैच जब होगा तो रेडी टू रनिंग करेक्ट है। ब्लॉक डज इट गो फ्रॉम रेडी टू रनिंग? नो, वाला टाइमर आउट, टाइमर आउट जब होगा तो रनिंग टू रेडी जाएगा, रेडी टू ब्लॉक नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर बताइए। काफी बच्चे ये क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, तो देखेंगे कौन सही जवाब देगा। लेट्स स्टार्ट। ये PYQ है। For every process, assume that there are always some processes in the ready state. बच्चों यहाँ पर सोच समझने की बात है, यहाँ पर कहा जा रहा है there are always some processes in the ready state। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ PYQs में, there are always some processes in ready state। ठीक है, now consider the following statements। if a process makes a transition D, terminate हो रहा है, it will result in another process making transition A immediately। बोलिएगा, जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होके बाहर जा रहा है, क्या ये जरूरी है कि न्यू प्रोसेस शुड गेट लोडेड इन मेमोरी? जरूरी नहीं है। अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल ना हो तो जरूरी नहीं है नीड टू लोड, तो दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, इमीडिएटली का मतलब है कंपल्सरी, कंपल्सरी है। ए प्रोसेस P2 इन ब्लॉक स्टेट कैन मेक ट्रांजिशन E while another process P1 is, हाँ कोई प्रोसेस रन कर रहा है, जब इनपुट आउटपुट हो गया तो यहां पर मूव कर सकता है, दिस करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। हाँ बिल्कुल ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, सो देयरफॉर दिस करेक्ट। देयरफॉर नॉन प्रीएम्प्टिव विल बी रॉन्ग, सो देयरफॉर 2 and 3 आर करेक्ट। 2 and 3 आर करेक्ट, तो यही है 2 and 3, ऑप्शन सी, 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा प्लीज। गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस PYQ with variation please, this PYQ with variation। क्वेश्चन PYQ में था नॉट सेव्ड, यहां पर मैं सेव पूछ रहा हूं, तो सोच समझ के बताइएगा प्लीज। Which of the following will be saved? Following will be saved on a context switch between process। जनरल पर्पज रजिस्टर्स सेव करना पड़ेगा, TLB ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर सेव नहीं करोगे, प्रोग्राम काउंटर कंपलसरी सेव करना पड़ेगा, स्टैक पॉइंटर भी आपको सेव करना पड़ेगा, रन टाइम स्टैक का जो स्टैक पॉइंटर है। लाइक दैट मींस एज एन MSQ क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज A + C + D। करेक्ट आंसर ACD, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, आंसर दीजिएगा प्लीज। टेल मी द आंसर फॉर दिस PYQ with variation। PYQ with variation।
Come on, tell me the answer for this. बच्चों गौर करने का है, यहां पर फॉल्स पूछ रहा है, फॉल्स. Which of the following is false, not true? The process state transition diagram of an operating system is as given below. Which of the following must be false? Must be false. Let us start. It is a uniprogrammed operating system. बोलिएगा. Is it true or false? Is it true or false? False. ये यूनिप्रोग्राम नहीं है, मल्टीप्रोग्राम्ड है. This is false. B bit. It uses preemptive scheduling. देखिएगा रनिंग टू रेडी नहीं है, so this is false. This is false. It uses non-preemptive scheduling. देखिएगा, is it preemptive or non-preemptive? Earlier was true, so therefore non-preemptive. This is true. It is a multiprocessor operating system. Last D. Multiprocessor है, more than one CPU, more than one running state? No, one single running state. So this is false. So false पूछा गया था. So as an MSQ question, A plus B plus D. तो जिन्होंने भी ABD कहा वो सही है. ABD कहा वो सही है. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. रक्षित is asking, how is it uniprogrammed? This is not uniprogrammed. That's why I wrote false. It is not uniprogrammed. It is false. It is multiprogram. ये multiprogram क्यों है? Because of ready state. Are you following? So A is false. यूनिप्रोग्राम का डायग्राम हमने क्लास में डिस्कस किया था. यूनिप्रोग्रामिंग में रेडी स्टेट नहीं होगा. रेडी स्टेट नहीं होगा. So therefore it is false. It is not uniprogram. It is multi-preemptive, it is preemptive scheduling. No, non-preemptive scheduling. That's why non-preemptive is true and preemptive is false. Hope you get the question. समझ में आ गई बात? Is everything okay? Anirudh Goel, please understand. Multiprocessor operating system means I will have more than one CPU. Means generally for multiprogramming में हम multiple running state बताएंगे, multiple running states बताएंगे. ठीक है? Multiple running states. So here I'm having only one running state. So that's why I'm not saying it is multiprocessor. I cannot say it is multiprocessor. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं how option B is false. देखिएगा, is this preemptive or non-preemptive? ये मुझे बताइएगा. This diagram is illustrating the concept of preemptive or non-preemptive? Non-preemptive. Non-preemptive. ये preemptive नहीं है. Preemptive में you will have a state from running to ready. You will have a transition from running to ready. Preemptive में, right? So that's why this is non-preemptive. So it uses preemptive scheduling is false. यही होता है बच्चों. True and false में बच्चे कंफ्यूज होकर wrong answer select करते हैं, even though you may be knowing the concept. ये important है. ठीक है ना? Is it okay? अगर आप running to ready रहा तो preemptive होगा. So it is non-preemptive. It is multi-programmed but not multi-processing. It is multi-programmed but not multi-processor. Multi-processor का मतलब आप समझ नहीं रहे हो. Multi-programming में multiple ready to run programs in memory. Multi-processor में I will have more than one CPU for classifying compulsory as a multiprocessor system. Please understand. Multiprocessor system. Both are different words. Multiprogramming is different from multiprocessor system. Multiprogramming में uniprocessor होगा. Uniprocessor is different. Uniprogramming is different. Don't get confused. Uniprocessor is different. Uniprogramming is different. Uniprocessor मतलब एक processor रहेगा. Uniprocessor में you can have uniprogramming or multiprogramming. You can have uniprogramming or multiprogramming. I hope you understand this. चलिए आगे जाएंगे. तो अब ये क्वेश्चंस है. बेस्ड ऑन दिस यू कैन प्रिपेयर ऑन दिस लाइंस. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर. हाँ, मल्टी प्रोसेसर इज पैरेलल प्रोसेसिंग, कंकरेंट प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग. मल्टी प्रोसेसर इज पैरेलल प्रोसेसिंग.
मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम यूनी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में आइदर यूनी प्रोग्राम रहेगा या मल्टी प्रोग्राम रहेगा. ठीक है ना? ओके. हम रेगुलर क्लास में काफी डिस्कस किए इसके बारे में. तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं सीपीयू शेड्यूलिंग पर. सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब द डिजाइन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस कुछ आ चुके हैं राइट विथ रिगार्ड टू सीपीयू शेड्यूलिंग. चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे. So first, the goals of CPU scheduler. So CPU scheduling will happen when some process running on CPU complete its execution or need to go for IO operation or get preempted because of time. So यहाँ पर वही लिखा गया है. A new process arrives, CPU scheduling हो सकती है. A process undergo wait to ready, CPU scheduling हो सकती है. Process undergoes ready run to wait. जब CPU scheduling कब कौन से इवेंट पर CPU scheduling होगी, एक्टिवेट होगी, वो यहाँ पर कंडीशन दिए गए. What are the goals of CPU scheduler? The goals of CPU scheduler is to maximize CPU utilization, minimize average turnaround time, minimize average response time, minimize average waiting time. So these are the important times or goals of CPU scheduler. ठीक है? Goals of CPU scheduler. Maximize CPU utilization, maximize the throughput, minimize the turnaround time, minimize the waiting time, minimize the response time. These are the important goals of CPU scheduler. तो यहां पर बच्चों जनरली मैंने देखा हूं बेस्ड ऑन द डाउट्स व्हिच द स्टूडेंट्स आस्क, पीपल हैव कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू दीस टाइम्स. सो आई फील इट नेसेसरी दैट एक हम क्विक डिस्कशन कर लेंगे विद रिगार्ड टू डिफरेंट टाइम्स दैट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद. चलिए यहां पर डेफिनेशन है, एक बार देख लीजिएगा सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर हम जब जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ना तकलीफ हो. अराइवल टाइम, द टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स इनटू द रेडी स्टेट इज कॉल्ड अराइवल टाइम. Arrival time is also called submission time. Arrival time is also called submission time. Next, burst time. The time required by the process for its complete execution is called burst time, also called service time. Also called service time. So that is burst, CPU burst. Completion time. The time by which the process completes its execution post arrival is called completion time. फिर फॉर्मूला बनेगा turnaround time. What is turnaround time? ये टर्न अराउंड टाइम अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे बच्चों, सो दैट यू हैव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सो दैट यू हैव अ टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो सी ऑन बोर्ड. लेट्स से दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस. द टाइम एट विच इट अराइव्स इन द सिस्टम इज कॉल्ड अराइवल टाइम. सो टाइम मूव्स इन दिस डायरेक्शन. Time moves in this direction. So see on board. As soon as it arrives, the process spends the time in ready queue. This amount of time that it spends is called waiting time. I can have multiple waiting times, so therefore this is the first waiting. ठीक है? Then the process may get to schedule onto CPU. So this amount of time spent is called burst time. And then the process may go for IO operation, IO burst time. Then the process will come back to ready queue, waiting in ready queue, again waiting time. Waiting से फिर CPU पे रन करेगा प्रोसेस for another burst. तो यहां पर burst time बोलेंगे, second burst. यहां पर मान लीजिए preemption हो गया है, it will come back to ready queue and spend for ready queue waiting. This is waiting 3. Again it runs on CPU. ये है another burst. And let's say यहां पर प्रोसेस हैज कंप्लीटेड कंप्लीशन टाइम. ठीक है? सो दिस होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस राइट फ्रॉम इट्स अराइवल टिल इट्स कंप्लीशन, ये जो टोटल टाइम है, दिस व्हाट इज टर्म्ड एज टर्न अराउंड टाइम. दिस इज व्हाट इज टर्म्ड एज टर्न अराउंड टाइम. कम ऑन बच्चों, डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम in unnecessary comments. Try to follow it. I know you may be knowing these concepts, लेकिन रिवीजन है ये. बस कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप छूट जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी. डोंट वेस्ट योर टाइम. टर्न अराउंड टाइम. तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला बनेगा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम.
इसी बेसिस पर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कंप्यूट कर सकते हैं. एवरेज टर्न अराउंड टाइम विल बी नथिंग बट सिग्मा टर्न अराउंड टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस I equal to 1 to n divided by number of processes. Then what is the total waiting time of the process? Waiting time of the process is nothing but turnaround time minus burst time plus IO burst time. अगर IO burst time 0 हो तो it will become just like turnaround time minus burst time. उसी तरह average waiting time भी आप निकाल सकोगे. Average waiting time is nothing but sigma waiting time of all the processes I equal to 1 to n divided by n. Last point, response time. क्या मुझे कोई बताएगा what is the formula for response time? Response time of a process. हर process का response time होगा. So what is the formula for response time? Anybody in the class? Anybody watching the video can you tell please what is response time formula? Sum of burst times of previous. No. The time मैं यहां पर लिखूंगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज. Response time. The first time the process gets onto CPU from its arrival is called response time. From arrival to the first time it runs on CPU. मान लीजिए process arrived at time 1, it got onto CPU at time 4, so 4 minus 1, 3 units. That is response time. कितना टाइम लगा प्रोसेस को इंटरैक्ट करने के लिए CPU पर from its arrival, first arrival in the ready queue to the time it gets onto CPU for the first time. First time के लिए, first arrival to first CPU time. That is called response time of the process. यहां पर आपको बताना जरूरी है कि response time of a process is different from something called response time of a process request. हर एक प्रोसेस की अपने कुछ रिक्वेस्ट होते हैं. रिक्वेस्ट और रिस्पांस टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोसेस रिस्पांस टाइम. दोनों काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पांस टाइम. चलिए आगे बढ़ेंगे. तो देखिएगा, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट रिस्पांस एंड अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द रिस्पांस टाइम ऑफ द प्रोसेस. वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमने बनाया है. सो अब ये गैंट चार्ट का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर पूरे एग्जांपल्स है सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक के, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं. आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट राइट बाय टेकिंग सूटेबल एग्जांपल्स. ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा. प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले थोड़े क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अपने तौर पर लूंगा. आप क्विकली थोड़ा वार्म अप के लिए, एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है. तो जो नेचुरल अप्रोच ऑफ शेड्यूलिंग है, जो फर्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक है, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. नेचुरल अप्रोच ऑफ शेड्यूलिंग. इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा अराइवल टाइम. मतलब जो भी प्रोसेस सबसे पहले आएगा वो शेड्यूल कर जाएगा ऑन सीपीयू. सबसे पहले एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे और पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड. अराइवल टाइम, सॉरी, सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5. ठीक है. अराइवल टाइम्स आर 0 2 4 1 3. Burst times are 1 2 3 2 4. Prepare the Gantt chart for this. Come on, boys and girls, don't waste your time. I'm repeatedly telling. Try to become serious and work out this problem and tell me what is average turnaround time, what is average waiting time, and average response time. What is average turnaround time, what is average waiting time, average response time for this data set. Please work out and tell.
So this is CPU. Time is 0. I hope you are working the problem. Time is 0. So at time 0, we have got process P1. We don't have any option other than starting with P1, completing at time 1. Do we have any process by time 1? Ha, sir, we have process by time 1, which is P4, arriving at time 1 with a burst time of 1, burst time of 2. So it completes at time 3. Then who will run next? The next process to run is process P2. Process P2. Requiring 2 units of time. So 5 it completes. Next, who is going to run? Next process to run is P5. P5. Need 4 units, 9. And next process P3, last one, 9 plus 3, 12. ये है आपका आंसर. ये है आपका आंसर. Non-preemptive approach of scheduling. Now see, observe here. First we'll calculate average turnaround time. Turnaround time of P1 is 1 minus 0, 1 plus turnaround time of P2 is 5 minus 2, 3. Turnaround time of P3 is 12 minus 5, 9. Turnaround time of P4 is 3 minus 1, 2. And turnaround time of process P5 is 9 minus 3, 6 divided by 5. So this will become 12, 13, 14, 15, 21 by 5, 4.2. Average turnaround time. Check it. Am I right? Because some people are writing 4.8. Is it 4.8? I made a mistake. P1 turnaround time, completion time minus arrival time, 1 minus 0, 1. P2, 5 minus 2, 3. P3, 12 minus 4. I think there I made a mistake. 8. P3. यहाँ पर mistake हो गई. P3 is 12 minus 4, 8. P4, 3 minus 1, 2. P5, 9 minus 3, 6. तो ये कितना होगा बच्चों? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 plus 6, 20 by 5. Exactly 4. Am I right? Why people got 4.8? देखिएगा silly mistake आप कैसे कर रहे हो. P3 is not 13. P3, oh, yeah, P3 is 12 minus 4, 8. That's right. Turnaround time. Waiting time क्या होगा? Average waiting time. Is it okay, boys and girls? Am I right? देखिएगा, what is the formula for turnaround time? Turnaround time is equal to completion time minus arrival time. Completion time minus arrival time. Check it. Completion time P1, 1 minus 0, 1. P2, 5 minus 2, 3. P3 completed at 12, 12 minus 4, 8. P4 completed at 3, 3 minus 1, 2. P5 completed at 9, 9 minus 3, 6. Correct? I hope you are getting it. What is average waiting time? चलिए calculate करेंगे. P1 average waiting, P1 waiting time is 0. P2 turnaround time is 3, burst time is 2. 3 minus 2, 1. P3 8 minus 3, 5. P4 is 2 minus 2, 0. P5 is 6 minus 4, 2. So therefore divided by 5. 5, 6, 7, 8. 8 by 5. 1.6. 1.6. क्या मुझे बताएंगे आप लोग बताओगे बच्चों व्हाट इज एवरेज रिस्पांस टाइम? कम ऑन टेल मी. ये बेसिस पर मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दूंगा आपको. फर्स्ट यू टर्न वर्क आउट एंड टेल व्हाट इज एवरेज रिस्पांस टाइम ऑफ दीज प्रोसेसेस. एवरेज रिस्पांस टाइम. व्हाट इज एवरेज रिस्पांस टाइम ऑफ दीज प्रोसेसेस? सेम होगा. बिल्कुल सही बात. आदित्य कुमार दास इज सेइंग कंप्लीशन टाइम कैसे आया? भैया ये जो टाइम है ये कंप्लीशन टाइम है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, कंप्लीशन टाइम है. देखिएगा टाइम एट विच द प्रोसेस P1 फ्रॉम 0 इट हैज वेटेड 0 टाइम. सो रेस्पॉन्स टाइम ऑफ P1 इज 0.
P2 came at time 2, got schedule at time 3. Look at this. P2 came at time 2 and got schedule at 3. So 2 to 3, 1 unit it has waited response time. P3, it came at 4 and got schedule at time 9. 4 to 9 kitna wait kiya? 5 units response time. P4 came at 1, got schedule at 1, response time is 0. P5 came at time 3, got schedule at 5, so 5 to 3, 2 units divided by 5, exactly same as waiting time, 8 by 5, 1.6. तो यहाँ पर आप एक हमेशा एज ए शॉर्टकट मेथड या शॉर्टकट टेक्निक का पर्पस या ये याद रख लीजिएगा कि फॉर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग average waiting time will always be equal to average response time. ये एक important concept है, हमेशा याद रख लीजिएगा please. As an important concept, remember this as an important point. For non-preemptive scheduling without IO burst times, non-preemptive scheduling without IO burst time, that is important, without IO burst times. Non-preemptive without IO burst times, average waiting time and average response time will always be same. Average waiting time and average response time will always be same. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेड्यूलिंग में, वो ये है कि इनपुट आउटपुट टाइम्स के साथ सीपीयू शेड्यूलिंग कैसे होगी, राइट. इनपुट आउटपुट टाइम्स के साथ कैसे शेड्यूलिंग होगी वो हमें डिस्कस करना होगा. तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन लूंगा मैं. बिफोर आई टेक अप द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन सीपीयू शेड्यूलिंग, लुक एट दिस. I will say like this: FCFS with input output scheduling. FCFS with input output scheduling. और input output burst times बोलेंगे. Input output burst times. IO burst times. ठीक है? IO burst times. So see on board. Problem लेंगे एक numerical. Process number, arrival time, burst time, IO burst time, and again burst time. Look at this. These are important concept. 1, 2, 3, 3 processes. ठीक है. और यहां पर अब हम लेंगे arrival times as 0, 2, 4. Let's say the burst times are 3, 10, 2. Here it is 2, 5, 4, and here it is 4, 8, 3. Come on. Draw the Gantt chart for this. And tell me what is the average turnaround time, average response time, average waiting time. Come on, do it. What is turnaround time, average waiting time, average response time for this data set? Please work out and let me know the answer. Come on, do it. Draw the Gantt chart. This will be interesting. This is a star question, please. You can expect questions based on this. So I'm marking this as a star topic. Come on. Yes, Yash Parmar will take with round robin also, no worries. Yes. We can assume concurrent IO. I will write like this: concurrent IO. मतलब IO operations can be done concurrently for multiple devices. We assume we have multiple IO devices. We assume we have multiple IO devices. चलिए, I am starting to work here, so you can also plan. You can also check here. This CPU, यहाँ पर रेडी क्यू भी हम बना लेंगे, रेडी क्यू का भी डायग्राम बना लेंगे. इज रेडी क्यू. सो दिस रेडी क्यू.
सो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, यहां पर एक बार देख लीजिएगा मेरे साथ कैसे हम वर्क करते हैं, ताकि आप समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि ये बेसिस पर गेट के क्वेश्चंस आए हैं, पहले आ चुके हैं क्वेश्चन। सो बी केयरफुल। टाइम इज 0। व्हाट प्रोसेसेस इज देयर इन रेडी क्यू? P1. So P1 starts on CPU, runs for 3 units. Between 0 to 3, process P2 has come. We add in P2 in the ready queue. So P1 3 units run कर चुका, उसके बाद उसे IO पे जाना है 10 units के लिए। मतलब यहां पर P1 जाएगा IO ऑपरेशन के लिए कितने टाइम? 10 units। मतलब 3 to 10 क्या टाइम पर कंप्लीट करेगा? 13 यूनिट्स पर कंप्लीट करेगा। इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स IO at time 13। चलिए, मल्टी प्रोग्रामिंग है, P2 रन करेगा CPU पर। सो दिस यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व P2 का अब आप टाइम 3 है ना, तो ठीक है, P2 रन करेगा 2 यूनिट्स के लिए। 3 + 2 5। बिटवीन 3 and 5 P3 हैज ऑलरेडी जॉइंड द क्यू। यहां पर हम P3 ऐड करेंगे। तो बच्चों प्लीज अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। So now concurrently IO है, तो P2 will also perform IO parallelly along with P1 IO। कितने टाइम के लिए बच्चों? 5 यूनिट्स के लिए। स्टार्ट कर रहा है 5 और 5 यूनिट के लिए, मतलब 10 यूनिट्स पर कंप्लीट करेगा। 10 यूनिट्स पर अपना IO कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा? P3 will take the charge on CPU। 4 यूनिट के लिए रन करेगा। 5 + 4 9 यूनिट्स। इसके बाद it will also go for IO। P3 will also go for IO। कितने टाइम के लिए? 8 यूनिट्स के लिए। 9 + 8 17। तो बच्चों अब यहां पर देखिएगा, सभी प्रोसेसेस P1 P2 P3 आर परफॉर्मिंग IO ऑपरेशन। एम आई राइट? P1 इज परफॉर्मिंग IO, P2 इज परफॉर्मिंग IO, P3 इज ऑल्सो परफॉर्मिंग IO। क्योंकि P1 अपना IO ऑपरेशन कंप्लीट करेगा 13 पर, P2 कंप्लीट करेगा 10 पर, P3 कंप्लीट करेगा 17 पर। तो मतलब अब टाइम है CPU का 9 यूनिट्स, ये फ्यूचर में कंप्लीट होंगे। तो मतलब CPU का क्या होगा? CPU इज गोइंग टू बी आइडल। तो सबसे पहले IO ऑपरेशन कौन कंप्लीट करेगा? P2 कंप्लीट करेगा। IO ऑपरेशन एट टाइम 10, मतलब 9 to 10 CPU आइडल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 9 to 10, between 9 and 10 CPU will be idle। IDLE idle, not ideal। IDLE idle, खाली रहेगा, खामोश रहेगा, no process। Next P2 will come into ready queue performing completing IO। अब यहां पर बच्चों बोलेंगे सर P1 is the first one to come। ये गलती होगी अगर आप वो सोचोगे। अगर आप सोचोगे ना सर मैं आइडल रख के P1 फर्स्ट प्रोसेस आया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, P1 को हम देना चाहिए चांस, ये गलत है। नेचुरल अप्रोच फॉलो करो आप, नेचुरल अप्रोच फॉलो करो। So P1 is first process to come in ready queue, but it is not the first process to complete IO। So why should I wait till P1 complete IO? P2 is completing IO at time 10, it will join the ready queue। तो फिर यहां पर P2 रन करेगा CPU पर फॉर इट्स सेकेंड बर्स्ट। सेकेंड बर्स्ट P2 का कितना है? 4 यूनिट। 10 + 4 14। 10 + 4 14। तो अब यहां पर देखिएगा, between 10 and 14 P1 has completed IO at 13। मतलब P1 रेडी क्यू में आ गया टाइम 13 पर। ये तो अभी बिजी है IO में। 17 पर कंप्लीट होगा इसका IO। 17 पर कंप्लीट होगा IO। फिर अब क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट P1 is there in ready queue, so P2 is over। P1 is there, so P1 will take the charge for second run 2 units 16। P1 कंप्लीट करेगा 16 पर। P1 is over, P2 is over, दोनों प्रोसेस हो गए। क्या P3 कंप्लीट हुआ? नो, P3 is not completed। P3 अपना IO कब कंप्लीट कर रहा है? 17 पर। करंट टाइम कितना है? 16। करंट टाइम कितना है? 16। तो मतलब क्या हुआ? फ्रॉम 16 to 17 अगेन CPU is idle। 16 to 17 CPU is idle। टाइम 17 पर P3 अपना IO कंप्लीट करके रेडी क्यू में आएगा। देन इट रन्स ऑन CPU फॉर 3 यूनिट्स, बैलेंस 3 यूनिट्स। 20 पर कंप्लीट होगा। तो बच्चों ये है कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके, देन आई एम वेरी श्योर दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन CPU शेड्यूलिंग विथ रिगार्ड टू दिस सिनेरियो। ऐसे सिनेरियोज में क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन वर्कआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप कंप्यूट करो पैरामीटर्स, नंबर 1 शेड्यूल लेंथ L, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम,
20 minus 0 is equal to 20 शेड्यूल लेंथ। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे परसेंटेज सीपीयू आइडलनेस ड्यूरिंग शेड्यूल लेंथ, तो ड्यूरिंग ए शेड्यूल लेंथ कितने टाइम के लिए सीपीयू आइडल था, यहां पर 1 यूनिट, यहां पर 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, तो 2 by 20, 1 by 10.1, 10%। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम, कम ऑन, व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, बॉयज एंड गर्ल्स, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, average turnaround time how much? P1 completed at time 16, arrive at time 0, 16, plus P2 completed at 14, 14 minus 2, 12, plus P3 completed at 20, 20 minus 4, 16, divided by 3. So 32, 34, 44 by 3 is average turnaround time. Is average turnaround time. एवरेज वेटिंग टाइम कितना बनेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, अब आप केयर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बाद में आप पछताओगे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो। व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम? व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम? P1 has no waiting time in the first instance। अब यहां पर देखिएगा P1 completed its IO at time 13, it got schedule at time 14, so P1 का वेटिंग टाइम 1 है, P1 का वेटिंग टाइम 1 है। P2 का वेटिंग निकालेंगे, फॉर द सेकंड रन इट केम एट टाइम 2, इट गॉट शेड्यूल एट टाइम 3, सो देयरफॉर 1 यूनिट इट वेटेड हियर। यहां पर देखेंगे P2 completed its IO at time 10 and got schedule at time 10, so therefore सेकंड के लिए नहीं, इसका भी वेटिंग टाइम 1 है P2 का। P3 का वेटिंग टाइम निकालेंगे, P3 का वेटिंग टाइम निकालेंगे, P3 का फर्स्ट रन के लिए 4 to 5, 1 यूनिट, और यहां पर देखिएगा इट कैन कंप्लीट एट 17 एंड गॉट शेड्यूल एट 17, सो दिस इज आल्सो 1 यूनिट, डिवाइडेड बाय 3, 3 by 3 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चे सही दे रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। क्या कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में लिखकर व्हाट इज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम? वेरी इंपॉर्टेंट, देखेंगे कौन बताएगा। व्हाट इज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम ऑफ दिस? कम ऑन, व्हाट इज एवरेज रेस्पॉन्स टाइम ऑफ दिस? What is average response time of this schedule? Very important. What is average response time of this problem for this schedule? Come on, come on. What is average response time? Let's start. So response time of the first process is 0. Right, is 0. Second process, it came at time 2, got schedule, so therefore it is 1. Therefore it is 1. Third process, P3 came at time 4, got schedule at 5, so therefore it is 1. Divided by 3, 2 by 3. 0.66. 2 by 3. So boys and girls, I am trying to tell, even though this is non-preemptive scheduling, लेकिन यहां पर इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट की वजह से response time और waiting time are different. Waiting time is 1, response time is 0.66. Waiting time is 1 and response time is 0.66. Both are different. So therefore, for non-preemptive scheduling without IO burst times, response time and waiting time will be same. Average response time and average waiting time will be same, but with input output scheduling it may be different. It may be different like this. That's the point I wanted to tell. That's an important point. ठीक है ना? Yes, Parmar, I will take it, not now, at the end I will take. At the end I will take, don't worry. But meanwhile, we'll take up some simple questions on practice and check whether you can work out. Come on, take up this question. Simple question. Simple question. काफी कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन था ये। प्रीवियस गेट क्वेश्चन है।
Which are one or more of the following CPU scheduling algorithms is or are starvation free? Starvation free. Priority based scheduling में starvation होगा, shortage of first में starvation होगा, low priority processes may suffer from starvation, shortage of first में long processes will suffer from starvation. First come first serve, first in first out, or first come first serve. You can say first in first out, or you can say FCFS and round robin. Both are starvation free. Both are starvation free. ये question है GATE 2023 का, right? In which there was a controversy, huge controversy. Some people were of the opinion that first come first serve suffers from starvation. And initially, when GATE committee has released the key, that also said starvation free. Lekin some people, many people applied for review of the question, challenged the question, and based on that challenge, IIT committee also got forced to review its answer and said that yes, first come first serve is starvation free, because the conditions which the people assume to be starvation free is unrealistic conditions. Unrealistic. Some people say that if the process which is running on CPU, first process which is running on CPU, gets stuck on CPU, get into infinite loop, and some sort of assumptions, that is not a realistic assumption. By nature, by tradition, by nature, naturally first come first serve is starvation free. You take up Galvin textbook, you take up important resources over internet from various universities of US, etc. I have shown it in my paid classes that it is starvation free. So we assume following starvation free. So I always follow the paradigm first come first serve, based on standard textbooks or based on standard content, it is starvation free. Okay, so later based on this only, the IIT has reviewed and accepted the challenge, and they said first come first serve is starvation free. Fine. Round robin is interactive system, it is purely starvation free. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा. यहां पर पूछ रहा हूं मैं इज और आर फॉल्स. कम ऑन टेल मी फास्ट. MCQ question, MSQ, sorry, MSQ. I'm starting the poll for 30 seconds. Come on, answer the question. Answer the question. Either or false in the context of CPU scheduling. Okay, can't see the question. I will minimize. अच्छा, पोल कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये MSQ है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया MSQ. चलिए मैं इसे नल एंड वाइट कर दूंगा. चलिए अब अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ से. Which of the following statements is or false in the context of CPU scheduling? Come on बच्चों. Turnaround time exclude waiting time. False. False. It includes waiting time. It includes waiting time. Next, the goal of CPU scheduling is to maximize CPU utilization and minimize throughput. दोनों conflicting है. False. Round robin policy can be used even when the CPU time required by each of the process is not known beforehand, a priori beforehand. True. Implementing preemptive scheduling doesn't need hardware support. No, it needs hardware support. Interrupt चाहिए. Interrupt is hardware support. Is false. So as MSQ question, the false options are A and B and D. The correct answer is A, B, D. So pat yourself, those people who gave the correct answer as A, B, D. Excellent. A, B, D is correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन आंसर मी प्लीज. वेरी सिंपल. वार्म अप क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी करिएगा और अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कीजिएगा प्लीज. सिंपल वार्म अप क्वेश्चंस है, सॉल्व कीजिएगा एंड फील द कॉन्फिडेंस, गेट द कॉन्फिडेंस. मैं ओवर एम्बिशियस टफ क्वेश्चंस लेकर नहीं आ रहा हूं. प्रैक्टिस होमवर्क प्रैक्टिस में थोड़े टफ क्वेश्चन दे रहा हूं वर्कआउट करने के लिए. यहां पर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए वेल ट्यून गेट क्वेश्चंस लेकर आया हूं. Come on, come on.
आंसर दे दीजिएगा इसका। ठीक है, 3 processes arrive at time 0 with CPU burst of 16, 20 and 10 millisecond. If the scheduler has prior knowledge about the length of the CPU burst, the minimum achievable average waiting time for these 3 processes in a non-preemptive scheduler. देखिएगा यहां पर कौन सी शेड्यूलिंग टेक्निक यूज करना है, यूज होना है, वो नहीं दिया गया है, राइट। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन मिनिमम वेटिंग टाइम कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अचीव करेगा, एसजेएफ। तो मतलब हमें यहां पर एसजेएफ एल्गोरिथम यूज करना है। तो एसजेएफ एल्गोरिथम से जब आप वर्क करोगे, राइट, सीपीयू, सो इट्स वेरी सिंपल, स्टार्टिंग एट टाइम 0. So if you call this process as P1, P2 and P3, you are going to run P3 first for 10 units. Then you are going to run P1 16 units, 26. Then you are going to run P2, the burst time 20, so therefore 46. This is the chart. पूछा यह जा रहा है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम अगर आप निकालोगे, P1 का वेटिंग टाइम देखिएगा 10 है, P2 का वेटिंग टाइम है 26, P3 का वेटिंग टाइम है 0, divided by 3. So this is 36 divided by 3. Answer है 12. Answer है 12. So therefore the correct answer is B. चलिए next question. ये आपने आंसर करना है, come on, workout. Come on, work out fast. Come on, work out. I'm hopeful that you are doing it. Consider the following set of processes assumed to have arrived at time 0. Scheduling algorithms are SJF and round robin. Assume that the processes are scheduled in the order P1, P2, P3, P1. P1, P2, P3, P4. Not order. It's not P1, P1, P2, P3, P4. For round robin, assume that the processes are scheduled in the order P1, P2, P3, P4. If the time quantum for the round robin is 4 milliseconds, then the absolute value of the difference between the average turnaround times of SJF and round robin is dash. Answer ABCD से बताइएगा क्या है। SJF से जब आप वर्क करोगे, मैं यहां पर छोटा गैंट चार्ट बनाऊंगा SJF का। is SJF 0. So all process arrived at time 0. So who is going to run first? P3 is going to run 2 units. Then after that P4 is going to run 4 units. So 2 plus 4, 6. Then P2 is going to run 7 units. 7 plus 6, 13. And then finally P1 is going to run for 8 units. 13 plus 8, 21. So यहाँ पे अगर आप इसका एवरेज टर्नअराउंड टाइम पूछा गया है, एवरेज टर्नअराउंड टाइम, तो एवरेज टर्नअराउंड टाइम SJF का कितना बना? P1 is 21, P2 is 13, P3 is 2, P4 is 6, divided by 4. So 20, 30, 34, 34, 36, 36 plus 6, 42. 42 by 4. 4 10s are 40, 4 5s are 20, 10.5. Am I correct? The average turnaround time of SJF is 10.5. बच्चों बोलिए सही हूँ गलत हूँ? Is it correct or wrong? Average turnaround time using SJF, is it 10.5 or not? 10.5. उसी तरह राउंड रॉबिन से गैंट चार्ट जब बनाओगे आप, यहां पर बना लेंगे राउंड रॉबिन. So processes are run in the order P1, P2, P3, P4. So in the ready queue, यहां पर हम ready queue लिखेंगे. I have processes in the order P1, P2, P3, P4 with time quantum of 4 millisecond. चलिए सबसे पहले at time 0 P1 will run 4 units to get preempted, added to the queue. Then P2 will run for 4 units, 8 added to the queue.
P3 will run and complete at 2 units, 10. P4 will run, complete at 14, no need to add. Next P1 will run, complete at 14 plus 4, 18. And then P2 will run for 3 units and completes, P2 run and completes at 3 units, take 3 units, so 21. This is round robin. बोलिएगा राउंड रॉबिन का एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है? राउंड रॉबिन से एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना बना? P1 18, P2 21, P3 10, P4 14 divided by 4. So this is 20, 30, 38, 39, 49, 49, 53, 63. 63 by 4. So 4 1s are 4, 5, 6. 4 5s are 23. Means 3 which are 4 7s are 28. 15.75. Am I right? 15.75 is the answer, correct. So what is the difference, bachcho? 15.75 minus 10.5. So it become how much? 5.25. So I think answer is C. Answer is C. Answer is C. 5.25. बिल्कुल सही. So slightly time consuming. थोड़ा practice करने से आपको आ जाएगा. These type of questions are simple 1 mark or 2 mark questions. चलिए next question लेंगे. ये भी simple है. वर्कआउट करके मुझे बता दीजिएगा प्लीज. सिंपल क्वेश्चन है, वर्कआउट करके बता दीजिएगा. Consider the following 4 processes with arrival times in milliseconds and their length of CPU burst in milliseconds as shown below. P1, P2 उसका arrival time और burst time है. Burst time of process P4 is Z. Burst time of process P4 is Z. Look at this. Not known. We have to find this. We have to find this. We have to find. These processes are run on a single processor using preemptive shortest remaining time first. तो scheduling technique जो use हो रही है SRTF, very important. SRTF, shortest remaining time first. ये PYQ question है. If the average waiting time the process is 1 millisecond, अगर using SRTF average waiting time 1 millisecond होना है, if you want the average waiting time to be 1 millisecond, what must be the value for Z? What must be the value for Z? Right? So how are we going to work out? What is the approach of solving this question? What is the approach of solving this question? Let us try to see. So यहाँ पर हम वर्कआउट करेंगे. So 4 processes, arrival times are 0, 1, 3, 4. So let me write here. Process number, arrival time, burst time. 1, 2, 3, 4. So arrival times are, you can check here, 0, 1, 3, 4. 0, 1, 3, 4. Burst times are 3, 1, 3, Z. 3, 1, 3, Z. ठीक है. Now we have to prepare the Gantt chart using SRTF. See on board. We have to prepare the Gantt chart using SRTF. So let's work out this CPU. 0. So we start with P1. How long we are going to run? Till 1. At time 1, P2 comes with a lower burst time. 1. This 2. So therefore preempt. P2 need 1 unit of time. It completes at time 2. It completes at time 2. Then at time 2, please observe, we have only P1. We don't have any other process. So हम P1 को ही run करेंगे. There is no other process. P3 is coming at time 3. तो यहाँ पर at time 3 you see P1 has a balance of 1 unit. So it is not going to get preempted. It is rather going to complete for taking 2 units. So मतलब P1 completed at time 4. Boys and girls. P1 completed at time 4. Now at time 4, we have got process P3 and P4. This has 3 and this has Z. This has 3 and this has Z. तो मतलब हमें यहाँ confusion होगा कि कौन रन करेगा, P3 रन करेगा या P4 रन करेगा.
P3 और P4 because both the process are there. Shortest job first की तरह रन करेंगे, preemption का possibility नहीं है क्योंकि दोनों process available है. So I can have two scenarios. I can have case 1. So what is case 1? Maybe if I will write like this, if Z is less than 3, so therefore if Z is less than 3, then P4 will run for Z units, मतलब 4 plus Z. उसके बाद आप P3 को रन करोगे 3 units, मतलब इसमें 3 ऐड करना होगा, so it becomes 7 plus Z. So this will be my Gantt chart using SRTF. तो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम. सो व्हाट इज वेटिंग टाइम ऑफ P1 completion time is turnaround time is 4 P1 and its burst time is 3, so 4 minus 3 1 unit. Waiting time of P1 is 1. P2 turnaround time is 2 minus 1 1 minus 1 0. P2 waiting time is 0. P3, look at that, P3 came at time 3, got scheduled at time Z plus 4, so Z plus 4 minus 3, it becomes Z plus 1. So waiting time of P3 is Z plus 1. Correct? And P4 came at time 4, got scheduled at time 4, no waiting time, 0, divided by 4. Right? We want waiting time to be 1 millisecond, just given 1. So it become like 4 is equal to Z plus 2. So therefore Z is equal to 4 minus 2 is equal to 2. So the correct answer is 2, as many people said. Correct answer is 2, as many people said. So therefore option B is correct. Good. चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कम ऑन, यू वर्क आउट दिस. प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, थोड़ा अपनी वार्म अप के लिए कर लीजिएगा प्लीज एंड टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स. Consider the set of process with arrival time, CPU burst time in millisecond, priority 0 is highest, shown below. Having process have IO burst times. None of the process have IO burst time. What is average time in millisecond using preemptive priority scheduling? Come on, work out and tell me what is the answer. What is the answer? Average waiting time using preemptive priority based scheduling. Average waiting time using preemptive priority based scheduling. Please work out and tell me. कौन बच्चे कोई ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहे मुझे, कोई अपने अपने बात कर रहे हैं. दैट इज द रीजन आई डोंट जनरली प्रेफर टू टेक यूट्यूब सेशंस. दैट इज द रीजन, बिकॉज देयर विल नॉट बी सीरियसनेस अमंग स्टूडेंट्स. आई एम वेरी सॉरी टू से लाइक दैट. कोई बच्चा पूछ रहा है आपका सेंटर कहाँ है, कोई बच्चा पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो. कम ऑन, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच बच्चों. दिस इज ऑफेंडिंग. You need not come. If you are not interested, need not attend the session and make the teacher unhappy. You should be serious. When I am serious, you should be serious. हाँ, मैं जोक कर रहा हूँ क्या? मैं तो जोक नहीं कर रहा हूँ. कौन गैंट चार्ट कैसे बनेगा? आई विल ट्राई टू ड्रॉ द गैंट चार्ट. दिस सीपीयू टाइम इज 0, अराइवल टाइम देखिएगा 0, प्रायोरिटी इज 2, दिस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, यहां पर लिख लेंगे हम. दिस हाईएस्ट प्रायोरिटी, दिस लोएस्ट प्रायोरिटी. प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग बनाना है हमें. चलिए स्टार्ट करेंगे. एट टाइम 0 आई हैव P1, आई हैव टू स्टार्ट विथ इट. How long P1 is going to run? P1 is going to run for next arrival. Next arrival is at time 2. देखिएगा 0 2. Next arrival is at time 2.
मतलब हम 2 यूनिट्स तक रन करेंगे. At time 2 P4 comes with a priority of 1, 1 is greater than 2. Priority 0 is highest, next highest 1, next highest 2, मतलब it is higher priority. So P4 will take the charge. P4 will take the charge starting at 2, and then it is going to run till next arrival. Next arrival is 5. Next arrival is at 5. Look at that. Next arrival is 5. P2. Arrival time 5, P2. With priority of 0, highest priority. मतलब अब यहां पर preempt होगा and P2 is going to take the charge. P2 is going to take the charge. Then what is going to happen? P2 is the highest priority. उसे कोई भी preempt नहीं कर पाएगा. Total burst time के लिए run करेगा वो. So 5 plus 28, 33. 28 plus 5, 33 units पे P2 complete कर चुका. Now we have remaining processes available. P2 is over. We have got P1, we have got P3, we have got P4, we have got P5. इनमें सबकी highest priority है P2 की, sorry, P4 की. So P4 is going to take the charge with priority level 1. तो उसका remaining burst time कितना है? P4 ने earlier run किया from 2 to 5 units, मतलब 3 units run किया. Its balance is 7, so it is going to finish at time 40. P2 is over. Sorry, P4 is over. P4 is also over. Next highest priority देखिएगा P1 की है. P1 earlier ran for 2 units, so its balance is how much? 9 units, 49. P1 is also over. Then balance processes are P3 and P5. Among them the highest priority is P3. P3 has not run for any time earlier, so P3 run करेगा 49 से 2 units के लिए. 49 plus 2, 51. फिर उसके बाद कौन रन करेगा? लास्ट में P5 रन करेगा, विच इज लोएस्ट प्रायोरिटी. इसका बर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट है 16 यूनिट्स, सो मतलब 67. 16 यूनिट्स ऐड करने से 67 बनेगा. दिस इज द गैंट चार्ट. इज इट करेक्ट? बोलिएगा, इज इट ओके? हैव यू गॉट द सेम गैंट चार्ट? टेल मी बॉयज एंड गर्ल्स. Is it the same Gantt chart? Yes. So what is the answer for this? Based on this, can I say 29? Can I say answer is option is B? Average waiting time. Option B? Yes. So therefore the correct answer, if you calculate the average waiting time, it is option B. It is option B. बिल्कुल सही. चलिए और एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन वर्कआउट कीजिएगा. SRTF है. Preemptive shortest remaining time first. SRTF. Average waiting time calculate कीजिएगा and tell me the answer. Let me see how many of you will give me the correct answer. SRTF और preemptive priority based scheduling पर काफी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, काफी क्वेश्चंस. सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज प्रैक्टिस दीस क्वेश्चंस. प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एंड प्रीएम्प्टिव SRTF पर काफी क्वेश्चंस आए हैं. एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम. सो दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग these questions. Come on, do it using SRTF. Prepare the Gantt chart and tell me what is average waiting time. What is average waiting time? Come on, what is the answer for this? यहां पर साइमल्टेनियसली मैं भी वर्क करूंगा आपके साथ. कम ऑन, देखिएगा प्लीज. SRTF time is 0. We are going to start with process P1. Runs till 3 units, 0 to 3. Its balance become 4, and then P2 is having lesser burst time, so P2 take the charge. P2 is going to run for 5, but it is not going to get preempted, so it is going to take all its burst. 3 plus 3, 6 units. देखिएगा ऐसा होगा so far. Now by this time all the process have come. P1 has a balance of 4. This is completed. This is 5. This is 2. मतलब who is going to take the charge? P4 is going to take the charge. It is going to run for 2 units, so 8. And followed by that, P1 has 4, balance of 4.
P1 is going to run for 12, and finally P3 is going to run for 5 units, 17. Tell me, have you got this chart? Have you got this chart? Is this correct? Farhan Khan, Shubham Maurya, is this correct? Okay. So therefore, what is the answer for this? Average waiting time. Waiting time of P1 in the first instance is 0. Let me calculate here. So P1 from 3 to 8, matlab 5 units. P2 has 0. P3 came at time 5 to 12, 7. P4 came at 6, got scheduled at 6, so 0 by 4. So therefore 12 by 4, 3. Answer is correct. Next. I think this is also simple. Just work out, or this you take as an exercise and work out. These also shortest remaining time. Similar question है. अब एज ए होमवर्क प्रैक्टिस कीजिएगा. अब लेकिन शेड्यूलिंग क्लोज करने से पहले मैं सिर्फ एक, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, राउंड रॉबिन विथ आईओ बस टाइम्स विल वर्क आउट. राउंड रॉबिन विथ आईओ बस टाइम्स विल वर्क आउट बिफोर वी क्लोज सीपीयू शेड्यूलिंग. हाँ, ये होमवर्क के लिए ट्राई कर लीजिएगा. वर्क आउट दिस क्वेश्चन एज होमवर्क. Now, as I promised in my earlier session, we will work out round robin with input output burst times. Chaliye, I will give a data set. You are going to try for first process number, arrival time, burst time. 1, 2, 3 process will take. Arrival time 0, burst time, and then we will also have IO burst time and burst time. Say 4, IO burst time is 10, and here I will take 3, and here I will take 2, and this is 6, or will take 3, and this is 4, and this 2, and here I will take like 5, and this is 2, and this is some 15, and here 4. Take time quantum is equal to 2 units. Prepare the Gantt chart. Prepare the Gantt chart and work out the problem. Yes, by default always concurrent IO. Default जो हमेशा होगा concurrent IO. I need not write. Multiple IO devices with multiple IO devices. मतलब concurrent IO. Come on, draw it. Complete the Gantt chart. Come on, I hope you are doing it, boys and girls. ये expected question है. You can expect questions on these lines.
Okay, schedule length is 21, turnaround time is 18. Okay, very good. एवरेज रिस्पांस टाइम भी निकालिएगा बच्चों, एवरेज रिस्पांस टाइम भी निकालिएगा, एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालिएगा. व्हाट इज एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम, सभी पैरामीटर्स कैलकुलेट कीजिएगा. Okay, let us start. Let us start working. We'll prepare the Gantt chart. This CPU. हमेशा राउंड रॉबिन में आप ये बात याद रखिएगा कि यू शुड ऑलवेज हैव रेडी क्यू. अगर आप रेडी क्यू नहीं लेंगे तो हमेशा रॉन्ग हो जाएगा आंसर. देयर इज अ हेवी प्रोबेबिलिटी दैट यू मे गो रॉन्ग इफ यू आर नॉट टेकिंग रेडी क्यू. सो सी ऑन बोर्ड. See on board, this is ready queue. CPU at time 0, we have P1 in the ready queue. We start with P1. How long? Actual burst time 4, time quantum is 2. मतलब P1 रन करेगा 2 यूनिट्स के लिए. P1 रन करेगा 2 यूनिट्स के लिए. देखिएगा बच्चों और कीजिएगा. At time 2, new process P2 comes, so we add P2 and P1 gets preempted back into ready queue. ये concept important है. P1 get preempted and added to the queue. P2 has come already and P1 got preempted. P3 has not yet entered. Next to run is P2. Burst time is 3 and time quantum is 2. Run for 4. It get preempted. No new process come. तो यहाँ पर P2 add होगा. Next what happens? P1 take the charge. P1 take the charge. Runs for its second burst. 4 plus 2, 6. Between 4 and 6, P3 has joined the queue we add here at time 5. But now P1 will go for IO. P1 will go for IO. कितने टाइम के लिए? 10 यूनिट्स के लिए. तो 16 पर अपना IO कंप्लीट होगा. Meanwhile, P2 runs on CPU for 1 unit. 6 plus 1, 7. Now P2 will go for IO. P2 will go for IO. 4 यूनिट के लिए. Starting from 7, मतलब 11 पे कंप्लीट होगा. Next, what is going to happen? P3 है, P3 will take the charge. Its burst time is 2, time quantum is also 2, so 9 it runs and go for IO. P3 concurrent IO. तो कितने टाइम के लिए? 15 यूनिट्स. वेरी लॉन्ग. 9 plus 15, 24. तो बच्चों सिनेरियो ऐसे है यहां तक. आई होप यू आर फॉलोइंग. आई होप यू आर फॉलोइंग. राइट? Now who is going to complete IO first? P1, P2, P3. 16, 11, 12, 24. मतलब P2 complete at time 11. 9 to 11 is idle. 9 to 11 is idle. Then at time 11, P2 joins the ready queue. P2 need 2 units in its second burst and complete. 11 plus 2, 13 it completes. Next, what is going to happen at time 13? Next IO, these two are busy performing IO. फिर P1 का IO पहले complete होगा time 16 पर. मतलब 13 to 16 is again idle. At time 16, P1 ready queue join करेगा for its second burst of 3 units. तो मतलब P1 run करेगा. Still P3 is busy performing IO. Run for 2 units, 18. And again go back to ready queue. Run for another 1 unit. 19 completes. तो मतलब P1 and P2 both have completed. P1 and P2 both have got completed. फिर इसके बाद क्या होगा? कौन करेगा? P3 is pending. P3 is pending and its IO is going to get over at time 24. P3's IO is getting completed at time 24. So मतलब 19 to 24 is idle. So at time 24, P3 joins the ready queue. It requires 4 units.
तो मतलब P3 is going to run for 2 units 26, again P3 is going to run with preemption 28. ये है आपका शेड्यूल गैंट चार्ट। चलिए मुझे बताइएगा क्या आपने एग्जैक्टली इसी तरह गैंट चार्ट डिराइव किया है? Have you got the Gantt chart like this, boys and girls? Tell me. Same? Very good. Those who got same, pat yourself. Congratulate yourself. Same Gantt chart. Very good. So, average turnaround time. What is average turnaround time? Average turnaround time. So, calculate the turnaround time of P1. P1 completed 19, arrived at 0, 19. Plus P2 completed at 13, 13 arrived at 2, 11. Plus P3 28 minus 5, 23 divided by 3, average turnaround time. So this is 10, 20, 30, 40, 50, 53 by 3, average turnaround time. Average waiting time. Average waiting time. देखिएगा P1 के लिए अब हम ऐसा कैलकुलेट करेंगे। Average waiting time is nothing but turnaround time minus burst time plus IO burst time. Plus IO burst time, I say. So turnaround time of P1 is 19. 19 minus burst time of P1, 4 plus 3, 7, plus 10, 17, 17. मतलब 2. P2. Turnaround time of P2 is 11. 11 minus total burst time 5 plus 4, 9. तो 2 बनेगा है. Plus P3, our turnaround time is 23 minus 15, 16, 17, 21, 2 units. So divided by 3, 6 by 3, 2, average waiting time. Correct? Then finally, average response time. जस्ट एवरेज रिस्पांस टाइम कितना होगा बच्चों? इसके एग्जाम्पल का बताइए, क्योंकि राउंड रॉबिन प्रीएम्प्टिव है तो अलग होगा। देखेंगे कौन बताएगा मुझे। व्हाट इज द आंसर फॉर एवरेज रिस्पांस टाइम? राइट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो। कम ऑन, व्हाट इज एवरेज रिस्पांस टाइम? व्हाट इज एवरेज रिस्पांस टाइम? बच्चों बोलिएगा, व्हाट इज एवरेज रिस्पांस टाइम? 0.6। ठीक है, चलिए। सो P1 का रिस्पांस टाइम है 0, P2 का रिस्पांस टाइम है 2 to 2, 0, P3 5 to 7, 5 to 7, 2 units divided by 3. So 2 by 3, 0.66. Very correct. So it is different from waiting time. It is different from waiting time. Response time is not same as waiting time always. That is the point I wanted to share. Percentage CPU idleness अगर आप निकालोगे, percentage CPU idleness अगर आप निकालोगे, यहां पर 2 यूनिट है, यहां पर 3 यूनिट है, यहां पर 19 to 24, 25 यूनिट्स है, तो 8 plus 2, 10 over 28, 10 by 28, 5 by 14 परसेंटेज आप निकाल सकते हो, परसेंटेज CPU आइडलनेस। और एक क्वेश्चन पूछूंगा, किसी ने डाउट भी पूछा था, वो क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा मैं। नंबर ऑफ प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, हाउ मेनी टोटल प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विचेस टेक्स प्लेस? Context, number of context switches are how many? Tell me the answer, boys and girls. Tell me the answer, number of context switches. देखिएगा यहां पर आप एक कोई यूजर प्रोसेस से यूजर प्रोसेस पे नहीं आ रहे हो, यहां पर हम बोलेंगे शेड्यूलिंग ओवरहेड, दैट्स व्हाई वी इग्नोर दिस। शेड्यूलिंग ओवरहेड है ये, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रही है बिटवीन प्रोसेस टू प्रोसेस। यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच है 1, यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच है 2, यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच है 3, यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट स्विच है 4, 1 2 3 4, ये नहीं है 1 2 3 4। अब यहां पर देखिएगा शेड्यूलिंग ओवरहेड है, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुई है यहां पे, ठीक है ना। शेड्यूलिंग ओवरहेड के बाद आप रन कर रहे हो तो इसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच में नहीं लेंगे। यहां पर भी देखिएगा शेड्यूलिंग ओवरहेड आइडलनेस है, यहां आइडलनेस है, ये शेड्यूलिंग ओवरहेड नहीं आइडलनेस है, तो हम यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं बोलेंगे फिर, राइट। हाँ देखिएगा ये भी शेड्यूलिंग ओवरहेड में आएगा, ये भी शेड्यूलिंग ओवरहेड में आएगा, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। स्विचिंग फ्रॉम वन, दिस इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट स्विच,
ये कॉन्टेक्स्ट स्विच में अकाउंट होगा, इवन दो वी आर शेड्यूलिंग द सेम प्रोसेस, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीएम्प्ट हुआ, टाइमर इंटरप्ट हुआ, प्रोसेस विल गो टू रेडी क्यू एंड अगेन गेट लोडेड, सो दिस कंसिडर्ड एज ए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यहाँ पर नहीं कंसिडर, यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, 6 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन शेड्यूलिंग ओवरहेड एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच। शेड्यूलिंग, जहां पर भी आप प्रोसेस शेड्यूल करेगा शेड्यूलिंग ओवरहेड भी आएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच में शेड्यूलिंग ओवरहेड इंक्लूड करेगा। एवरी कॉन्टेक्स्ट स्विच इज शेड्यूलिंग ओवरहेड बट एवरी शेड्यूलिंग ओवरहेड इज नॉट कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, every scheduling overhead is not context switch but every context switch is including scheduling overhead। scheduling overheads की अगर बात करोगे तो आप ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा scheduling overheads में। so if I ask like number of scheduling overheads are, now scheduling overhead में the time taken for the process to come on to CPU from ready queue to CPU पे आने के लिए हम scheduling overhead बोलेंगे। context switch include scheduling overhead। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जनरली द टाइम ऑफ सेविंग भी ऐड होगा, टाइम ऑफ सेविंग द पीसीबी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। शेड्यूलिंग ओवरहेड में जनरली द टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस टू कम फ्रॉम सीपीयू, फ्रॉम रेडी क्यू टू सीपीयू। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम ऑफ सेविंग द सीपीयू एंड टाइम ऑफ लोडिंग द सीपीयू, टाइम ऑफ लोडिंग द पीसीबी ऑन टू सीपीयू, ये है। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। लेकिन आपको कुछ बताना है मुझे यहाँ पर, सुनिएगा गौर से। एक्चुअली आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो इनिशियली आई थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग द सेशन, लेकिन आपके एग्जाम्स करीब है इसलिए मैं पोस्टपोन नहीं किया। सो इनिशियली आई प्लान टू टेक द फुल सेशन बाय टेकिंग अ ब्रेक एंड सो ऑन, बट आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ कंजेशन इन माई चेस्ट, काफ़ी खांसी हो रही है मुझे। सो आई टुक मेडिसिन एंड केम। सो इनिशियली आई थॉट I will take the full session, लेकिन because of my health I cannot continue, so I will take a break in the sense that we will stop the session and we will have the discussion in part 2 later point of time, that will be announced and you will come to know about it part 2, ठीक है। So part 2 I will take up threads, I will take up synchronization, memory management and file system and completed that। हाँ, कल एल्गो होगा, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट से मैं एल्गो भी कंप्लीट करूंगा इसी तरीके से। देन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे वो, बिकॉज आई कैनॉट टेक लॉन्ग सेशंस, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है खांसी का, ठीक है। सो बट बिकॉज ऑफ योर प्रियोरिटी आई हैव टेकन द सेशन। आपकी प्रियोरिटी के लिए मैंने सेशन लिया है ताकि आपको कुछ ना कुछ कंप्लीशन के लिए होगा, ठीक है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्लीज, विल मीट अगेन and then we will have the session of part 2 operating systems, and tomorrow we'll have algorithm session, and that also will have part 1 and part 2 like this. So almost 3 hours we have taken today's session. So upload karunga main PDF, aap PDF access kijiyega. Take care and continue your health. Okay, thank you so much, take care, good night, love you boys and